जय विश्व, जय विश्व, जय विश्व। Hey to world maker, universe maker. Hey to universe maker, universe maker, universe maker. Responsible for all. World in charge. World in charge. We report to you, world in charge. This world belongs to you, not to public. This world belongs to you, world in charge. Listen to us, listen to me. We forgot for some time that you are there. We forgot some time that you are there, world in charge, world maker, honor of universe, mistake of people. We forgot you. We forgot you. We forgot you. Mistake by people, mistake by people. People were crazy, people were crazy, people were crazy. Whole world was crazy. Whole world was crazy. That's why they are suffering. That's why they are suffering. No other way. सारी दुनिया पागल हो गई थी, इसलिए भूल गई थी ऊपर वाले को। सारी दुनिया पागल हो गई थी। मुफ़लफीश कुल्लू नफर, कुल्लू दुनिया कुल्लू आला मुफ़लफीश, मुफ़लफीश। सगीर दिमाग, सगीर मुंह। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। April 1st, 2020, not a joking day, a serious day, बहुत गंभीर दिन। छोड़ूंगा नहीं, shall not leave you anybody. I did not damage you, but you damaged me. A kind of thought, a kind of concept one should have. My atom bomb could not save me. My nuclear reactor could not save me. My money could not save me. It scared me. Those powerful Sikandars all are underground. Those powerful people who made atom bomb, who made nuclear bomb, who made weapons to sell and win all world, they are underground. They have gone to hidings, worried. Powerful people, they are all worried. They are all worried. This is what Corona means. Corona means that I am not going to show my face to you, but I will damage you. I am very simple. I am not doing any harm to you, but push you. You are so scared and I am nothing. This is what I understand. I am only some unknown entity and you are owners of this world. You think so, but I teach you what you are. बड़े बड़े सिकंदर भाग गए देख के मुझे। दिखता मैं नहीं तब भी भाग गए। मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का, फिर भी भाग गए। कमाल है। किसने बॉम्ब बनाए आपने, कितने हथियार बनाए आपने, सारा पैसा आपने उसमें लगा दिया। पैसा मैंने दिया आपको, आपने सारा उसमें लगा दिया और फिर भी डर रहे हो मुझसे। कहाँ है वो बॉम्ब आपके? मारो मुझे। किधर है वो हथियार आपके? मारो मुझे, मैं तैयार हूं मरने के लिए। आइए लड़िए। है किसी में दम? एक दूसरे को मारते रहे सालों साल से, सैकड़ों हजारों साल से, लाखों मार दिए। मैंने कुछ मारने शुरू किए तो भाग गए, डर गए, घबरा गए। अभी मैंने किया क्या है? अभी तो मैंने किया कुछ नहीं। आई एम जस्ट एट ऑरिजिन। आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ टू हैंडल यू। एंड आप भाग गए, भाग रहे हैं। कहाँ जाओगे? एक दूसरे को मारते थे, सोचते नहीं थे इसको मार दो, उसको मार दो।
दुनिया पे राज कर लो, मारो मारो सबको। बड़े बड़े आए चले गए, वो नहीं कुछ पाए, आपकी क्या औकात है? मैं बहुत सीधा साधा हूँ, फिर भी डर रहे हो। क्या किया मैंने? आई हैव डन नथिंग, नथिंग आई हैव डन, इट्स ऑल योर कर्म। मेरे को क्यों दोष दे रहे हो भाई? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने बहुत कुछ किया है। क्या क्या किया आपने? सारा धन आपने लगा दिया। All my wealth you have used for bombs, for ammunitions, for killing each other. So now I am killing you. Only a few I killed so far, and you are in panic. All world is in panic. I have just traveled to see you, and you are in panic. That's all. I don't understand. Why are you in panic? But because you are guilty conscious, that's why you are in panic. आपकी दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका, आप डकैत की दाढ़ी में तिनका है, लुटेरे हैं आप, मुझे लूटा आपने, तो क्या हो गया? अगर मैंने 2-4 मार दिए तो क्या फर्क पड़ता है? आपका हक है मरने का। यू आर सुटेबल, मोस्ट सुटेड एंटिटी इन दिस यूनिवर्स टू बी किल्ड बाई पर्सन लाइक मी, एंड आई एम डिफाइंड बाई यू एज कोरोना। क्या किया क्या है मैंने? कुछ की सांस रोक दी, और क्या किया? बस इतना ही किया है। डर गए? इतना प्यार जिंदगी से, हद है। इतनी तमन्ना जीने की, और जब दूसरे को मारते हो तब क्या होता है? क्या किया आपने? करोड़ों आपने मार दिए, कितने सेंचुरीज में। मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। आपने लालच में, अपनी ग्रीड में कितनों को मारा? कोई हिसाब है? मरो, कुछ तो मरो, पता तो लगे मौत क्या होती है। घुस गए किसी कंट्री में, मार दिया, लाखों को, करोड़ों को लूट लिया, भुगतो। ऐसे ही भुगतना पड़ता है। बड़े बड़े 30 मार का सिकंदर, अपने को दुनिया पर राज करके देने वाले लोग आज भीगी बिल्ली बने बैठे, भीगी बिल्ली बने बैठे। इतना डर मेरा? मैं हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। मैं तो पहले भी था, आगे भी रहूंगा और रहता रहूंगा। आपको समझ नहीं आएगा। आपके अंदर माइंड गलत काम के लिए है, सही काम के लिए नहीं। मेरा कितना ध्यान किया था आपने? कब किया था? वो भी लालच के लिए, हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, तो लो ना। एक आइटम के साथ एक फ्री मिलती है ना, मैं भी दे रहा हूँ। मैंने आपको कितना कुछ दिया, अब आप एक आइटम ले लो मेरी। इतना डरता है ये मानव, पढ़ा लिखा मानव, साइंस का मानव, बहुत डरता है। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तो 10% को भी नहीं किया, डर गए। वो देखो, दुनिया का बाप समझने वाला पसीना निकला पड़ा है, दस्त लगे हुए हैं उसको, दस्त लगे हुए हैं। 1-2 लाख मर जाएंगे, कोई बात नहीं है कह रहे हैं। 2 लाख मर जाएंगे, मैं भुगत लूंगा। 2 लाख भी मर गए तो कोई बात नहीं, मान लूंगा मैं उसको, कहूँगा बहुत अच्छा काम किया मैंने। अरे भाई, 1-2 लाख में क्या होगा? मेरी रोटी हजम भी नहीं होगी। आई कैन नॉट हैव माई डाइजेशन, आई नीड मोर, आई नीड मोर। माई सूप इज फॉर, इफ आई किल 5 करोड़, दिस इज माई सूप। मेरा स्टार्टर है वो। मैं तो कुछ किया नहीं है अभी, भाग गए। आप क्या समझते हैं मैं घर में नहीं घुस सकता? आपका गलत ख्याल है। मैं घर में भी घुस सकता हूँ, क्या कर लोगे आप? लेकिन मैं घुस नहीं रहा, मेरी शराफत है, ये मेरी शराफत है। मैं खाली अभी देखने आया हूँ, अभी तो रिकॉनेसेंस कर रहा हूँ, अभी तो मैं देखने आया हूँ आप हो कौन। अगर मैं चाहता तो अब तक बहुत कुछ कर सकता था, नहीं किया मैंने, अभी नहीं किया। मुझे ध्यान रखना है उन डॉक्टर्स का भी, उन नर्सों का भी, उनका भी ध्यान रखना है। मुझे गरीबों का भी ध्यान रखना है जो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने तो पहले हथौड़े बजाने उन लोगों पे जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, जो पब्लिक की सेवा नहीं करना चाहते, लूटना चाहते हैं, उनको मार रहा है मैंने पहले। मैं उसी काम के लिए आया हूँ, मेरे को यही असाइनमेंट दिया गया है।
पहले मैं जानवरों के पीछे पड़ता था, छोड़ो जानवरों को, क्या रखा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, भागो, क्योंकि तुम जानवरों से बड़े जानवर हो। यू आर सुपर एनिमल्स, यू पॉलिटिशियंस, लूटर्स एंड रॉबर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरा सब दिल भी निकाल के मेरा खा गए, मेरा पैर भी निकाल के खा गए। कितना जोड़ा था मैंने, जीव जंतुओं को मार मार के तेल इकट्ठा किया था, आप सब निकाल के खा गए। इतनी अच्छी ऑक्सीजन डाली थी, नाइट्रोजन आर्गन डाली थी मैंने हवा में, सब खराब कर दिया आपने। मैं भी नहीं सांस ले पा रहा उसमें, तो आपको कैसे लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा। मेरा कोई मंत्री आता नहीं ऊपर से हवा को सूंघने, यहाँ पे इतनी गंदी हवा कर दी आपने, तो मैं छोड़ दूंगा आपको। मैं अब आपसे अपना अकाउंट्स लेने आया हूँ, मैं ऊपर का सीएजी हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सीएजी रिकमेंड करता है, मैं तो सीधा एक्शन लेता हूँ। अमेरिका वालों ध्यान रखना, आ गया हूँ मैं। तुम ये बहुत बनते हो दुनिया, सुन ले, बहुत गया है लोगों के साथ, अब आ गया। तो बिल्डिंग गिरा दो, सबको मार दो, यही तो किया आपने। क्या किया, पैसे को बल, पैसे का, आपका नहीं पैसा, लेकिन पैसे का बल। बॉम्ब बनाएंगे, बनाओ, उसको मिसाइल डालेंगे, डालो, डालो मिसाइल, डालो रॉकेट, भेजो सूरज पे, भेजो रॉकेट, भेजो, ताकत है तो। बस 1-2-3 महीने में दम निकल गया, इतनी शक्ति है आप में। क्या है आप बताइए मुझे, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, पर दिखूंगा नहीं आपको। हिम्मत है तो बताइए मैं क्या हूँ, लड़िए मुझसे आके। किससे लड़े, मैं हूं ही नहीं, बहुत मेरा डर है आपको, मैं तो हूं ही नहीं। बस दहशत का कोई इलाज है, कोई इलाज नहीं है। मैं तो पहले भी था, आपको समझ नहीं आता था, मैं आज भी हूँ, आप देख नहीं पा रहे, और मैं आगे भी होऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। आप होंगे तो समझेंगे, आप होंगे ही नहीं, कीजिए क्या करेंगे मेरा। मैं ख्याल नहीं कह रहा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, इसी तरह से कह रहा हूँ, नाटक के तरीके से, क्योंकि आप भी तो नाटक करते रहे। हड़प जाओ दूसरे का माल, हड़पो और हड़पो, दुनिया को बेवकूफ बनाओ और लूटो। और जब अपने पे आ गई, तुम भी आ जाओ यार, अरे भाई मेरी मदद कर दो यार, अरे भाई कोई आ जाए मुझे बचा ले। आपके गवर्नर कह रहे भाई कोई भी आ जाए, चाइना वाले आ जाओ, फिलीपाइंस वाले आ जाओ, फ्रांस वाले आ जाओ, कोई तो आ जाओ, कोई भी आ जाओ, सब आ जाओ, जिसको आना है मेरी मदद कर दो, मैं मर रहा हूँ। हाँ, यही होता है सिकंदर का हाल। बड़े बड़े सिकंदर बने थे आप, पता नहीं क्या क्या बने थे। राम यमराज आ गया मैं बन गए, यमराज जमीन पे घूम रहा है, याद रख लेना, पूरे डिपार्टमेंट के साथ। और जब वो आता है तो शनि भी भाग जाता है, शिव जी भी भाग जाता है, सब भाग जाते हैं, आ गया आ गया आ गया। और मैं वो यमराज नहीं हूँ, मैं कर्मराज हूँ, एक एक का हिसाब करके जाऊँगा। आपके सारे अकाउंट्स मेरे पास हैं, खोल के देख लेना क्या लिखा है उसमें, अपने डिजिटल लाइन में देख लो, अकाउंट आपका है। फिर मत शिकायत करना मुझसे, क्योंकि मैं शिकायत नहीं सुनता किसी की, मैं सीधा एक्शन लेता हूँ। मैं कोई एविडेंस नहीं देखता, ना मुझे कोई आर्गुमेंट सुननी है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे ये क्यों किया है। सीधा शूट, अपने रॉकेट में जाइए, जो आप बनाए बहुत सारे, आपने तो मार्स तक बनाए थे, और आपने सूरज तो खैर नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं पहुंचा दूंगा आपको जुपिटर में। इतनी शक्ति तो मुझ में है, पहुंचा दूंगा मैं आपको, चिंता ना करो। लेकिन एक बार चांस दूंगा आपको, कुछ चांस तो मैं दूंगा, शरीफ तो मैं भी हूं, कुछ चांस। अब भी सुधर जाओ, अपनी हेगड़ी जलाना छोड़ दो। मेरी पृथ्वी जो मैंने बनाई है बड़ी मेहनत करके, इसको काम करने दो। नहीं करने दोगे तो फिर मैं बता दूंगा क्या हूं मैं। अभी तो मैंने खाली समझाया है आपको, सिर्फ समझाया है। अभी मैंने तोड़ना नहीं है पृथ्वी को, आपको तोड़ना है। पृथ्वी ऐसे रहेगी, बहुत खेल हो गया,
बहुत दिन से समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। आपका नशा उतरता नहीं था, पता नहीं क्या नशा था आप लोगों में, दुनिया वालों में। एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था आपने, इसका छीन लो, उसका छीन लो, जिसको रोटी खाने को जो खाने मत दो उसको मार दो। और ये खाली अमेरिका के लिए नहीं है, सबके लिए, कोई बड़ा कोई छोटा, पता नहीं क्या चाहते हैं। भूल जाते हैं मुझे कि मैंने ज़मीन बनाई है, मैंने सब कुछ बनाया है। किसके लिए? अपने लिए। मुझे यही आपके लिए बनाया है, और आप सब कुछ तोड़ रहे थे। तोड़ो मुझे, मैं आपके सामने हूँ। मुझे किसी जहाज की, किसी फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है, और सब जगह हूँ, पहुँच चुका हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं आज की तारीख में। इसे 1 अप्रैल मत समझना, ये 1 अप्रैल की बात नहीं, ये सच है। आज की तारीख में मैं सब जगह हूँ, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट कौन होता है आप जानते हैं। आप सोचिए आपको क्या करना है। मैं कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, आप खुद बिगाड़ रहे हैं अपना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, ज़बरदस्ती मुझे ब्लेम कर रहे हैं। मैं पहले भी करता रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं बनी दुनिया में, सब पहले से है। आपकी गलतियों को आप भुगते, मैं नहीं भुगतूंगा। आपकी गलतियां हैं, मेरी नहीं, तो मैं क्यों भुगतूं? मैं तो पहले भी था, अब भी हूँ और रहूँगा भी। पार्ट ऑफ पार्सल हूँ यूनिवर्स का, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और आप अपने दिमाग से गंद निकाल दो। मैं ये नहीं कह रहा मेरी पूजा पाठ करो, मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करानी। अपने दिमाग को देखो, अपने मन को देखो, दूसरों को देखो। करोड़ों जानवर मार के खा गए आप, मैंने कहा था, क्यों खा गए? मेरी खोद खोद के सारा कुछ निकाल लिया आपने, मैंने कहा था, निकाल लिया आपने। सब कुछ निकाल लिया जमीन से, जितना निकाल सकते थे। और उस पर हेकड़ी दिखा रहे हो अपनी कि मेरा है, मेरा है। स्टील निकाल ली मेरी, कार्य बना लिया आपने, प्लास्टिक निकाल लिया, तेल निकाल लिया, और अपने आप को शेख समझता है कोई कुछ समझता है किसी का कुछ नहीं। सब लूट कर बेच कर खाना, क्या करोगे मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तक समझ नहीं आया कि आपको मैंने कैसे बनाया था। मैं अपना डिज़ाइन भूल गया, फार्मूला सारा भूल गया। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये मेरी अपनी प्रोडक्शन कैसे खराब हो गई। ऐसा तो मैंने कहा है, सोचा ही नहीं था। इतना शैतान कहाँ घुस गया इनके अंदर। और शैतान भी तो मेरा ही है, मैंने ही तो उसको बनाया था। पता नहीं मैं क्या करूं, इसको कैसे संभालूं लोगों को। पर इनकी कुटाई करना ही काफ़ी है, मैं तो ये समझता हूँ। इनकी इतनी पिटाई कर दूं मैं इस बार कि ये 5000 साल तक आगे कुछ ऐसी बात ना करें। इतनी कुटाई इनकी कर देनी चाहिए, इसी लायक है। और वो मैं कर रहा हूँ। उसमें जो मरेगा मर जाएगा, बचेगा बच जाएगा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कितने मरेंगे कितने नहीं मरेंगे। बचा लो अपने आप को, बचा सकते हो तो बचा लो। मरेगा तो मरेगा, लेकिन याद रख लेना, मुझसे वही मरेगा जो कमज़ोर होगा, जो तंदुरुस्त होगा मन से तन से, वो नहीं मरेगा। क्योंकि मैं कमज़ोर पे वार करता हूँ, कभी नहीं ऐसे वाले पे वार करता हूँ। मैं वार करता हूँ उस पर जो बहुत समझता है अपने आप को, जो बहुत डरता भी है। याद रख लेना, जितना बड़ा आदमी, जितना पैसे वाला, बहुत डरता है, बहुत डरता है। पता नहीं मुझे कुछ हो जाए तो। और जो गरीब है वो नहीं डरता, उसे कोई चिंता नहीं। आपके सामने सबूत है। सैकड़ों किलोमीटर चले गए, आप 10 किलोमीटर चलेंगे? चल के दिखाइए, निकलिए घर से बाहर, चलिए, टेस्ट लेता हूँ आपका। है हिम्मत? घुस गए घर में, घर में घुस गए, डर गए। क्या कर लेगा घर आपका? बच जाएगा। मैं खिड़की में से घुस जाऊंगा, क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे? मौत घर में नहीं आएगी क्या? बच जाएंगे आप। प्राइम मिनिस्टर बचा लेगा आपको, प्रेसिडेंट बचा लेगा आपको? कोई नहीं बचाएगा जब मैं आऊँगा, क्योंकि मैं आत्मा भी हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अभी मैंने आपको कुछ कहा नहीं, होश लेना, सोच लेना। कविताएं लिख लो, कहानी लिख लो,
अंताक्षरी खेल लो, रामायण कुछ भी देख लो, कुछ नहीं होगा, सब ड्रामा है। मेरे सामने कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। रावण की भी मैंने वो कुटाई की थी, जो स्वर्ग की जगह आया था मुझसे बहस करने, ऐसा मारा था उस त्रिलोकी नाथ को कि उसके बाद उसकी उठा नहीं, भाग गया। वही हूं मैं, वही हूं, याद रख लेना। मेरा नाम कुछ भी दे लो आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो काम चेक कर रहा हूं आपका, और छोड़ूंगा नहीं। ये सब में आपको मेरा मैसेज देने का था। अभी भी समझ जाओ, करोड़ों मरेंगे। अमेरिका वाले तो डर गया, कहने भी लग गया कि 2 लाख मरेंगे, कम से कम 2 नहीं, और भी मरेंगे, और भी मरेंगे। अब देखो मौत का कितना डर। सैंक्शन उठा ली ईरान की, पहले तो मार रहा था, मार 15 दिन पहले तक, 7 दिन पहले तक मारे जा रहा था, मारो इसको, मारो इसको, ये नहीं करेंगे, इसका वो नहीं करेंगे, वेनेजुएला की ऐसी की तैसी, ईरान की ऐसी की तैसी, चाइना की ऐसी की तैसी। अब क्या हो गया, बस इतना सा डर। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, अभी तो सिर्फ 3-4 हज़ार मरे अमेरिका में, ज़्यादा मरे नहीं। 25 करोड़ में 3 हज़ार मरे हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया। मेरे तो 10 करोड़ मारने का इरादा था। अभी तो मेरा काम ही नहीं शुरू हुआ, मैंने काम ही नहीं शुरू किया अभी से डाउन। इतनी हिम्मत है, नंगे हो गए सब, दिखा दिया हम कुछ नहीं है। नहीं तो लाट साहब बनेंगे तो दुनिया के बनो, बनो लाट साहब। मारो इराक को, मारो लीबिया को, बताऊंगा, मारो अफगानिस्तान को, सबको मारो तुम, मैं हूं, ऐसा मारूंगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तेल चाहिए था तुमको, लो तेल चाहिए था ना, सारी दुनिया का तेल ले लो। तुमको चाइना का भी मटेरियल चाहिए था, समुद्र से निकाल लो, जाओ साउथ चाइना सी, निकालिए वेल्थ वहाँ की। आपको वो पैसा चाहिए था, दूसरों का माल हड़पना है, हड़पो, अपनी मेहनत से नहीं कमाना। दूसरों के मौत का सामान बेच रहे हैं, उससे कमाना है आपको, बेचिए सामान, बिकवाता हूँ सामान में आपका। बस हो गए ठंडे, कुछ भी नहीं किया, ठंडे हो गए। अभी तो टिकट भी मैंने साइन नहीं किया, ठंडे हो गए। अभी तो मैं देखने आया था, फिर आऊँगा, डरना मत। अभी सिर्फ देखने आया था कि मैं अपना रूट किधर से लूँगा, क्या प्लॉट करूँगा। मेरा स्टाफ अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। उनको सबको सुला दिया मैंने, जो आपकी रक्षा करते थे, चिंता न करो, उनको सबको मैं सुलाया आया हूँ। जिनको आप मानते रहे हो वो सो रहे हैं, कई साल सोते रहेंगे, और मैं एक्टिव रहूँगा तब तक। इसलिए तैयार हो जाओ उनसे लड़ने के लिए। हिम्मत है तो लड़ाई कीजिए, नहीं तो बड़े आसानी से मार दूंगा मैं सबको। या अपने आप को ठीक कर लेना, ठीक कर लेना अपने आप को, यही मेरा मैसेज है आपको, नहीं तो पछताओगे। इतना डर पैदा हो गया आप में, इतना डर आज की तारीख में। अर्थी भी नहीं डर सकते लोगों की, यहाँ भाग गए, क्या डर है देखिए, इतना डर मेरा। बड़ी जिंदगी से प्यार है आपको, सबको, सारी दुनिया को। ओहो हो, जिंदगी जरा सी, पता नहीं अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। अरे वाह, लोग मर जाएं आपको कोई चिंता नहीं, कोई खाना ना खाए आपको कोई चिंता नहीं, किसी को पानी न मिले आपको कोई चिंता नहीं, आपको मिलना चाहिए। दूसरों की ताकत में ऐश करने वालों, आपका टेस्ट करने वाला आ चुका है, और बहुत पहले से है। अब मैं थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गई, जवान हो गया हूँ, इसलिए अब मैं एक्स्ट में आ गया हूँ। बहुत जानवर खाए आपने, बहुत खाए, बहुत ऐश की आपने, और बहुत दारू पी आपने, बहुत नशा किया आपने। अब आपको दिखाना है कि आप में कितनी शक्ति आई है, और मैं देखने आया हूँ। अब दिखाइए शक्ति अपनी, छुपिए मत मुझसे। जितना छुपोगे उतना वार मैं और करूँगा, उतना मैं अपने को एक्सपैंड और करूँगा, एम्पावर करूँगा। और मेरे सामने लड़ोगे तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, भाग जाऊँगा, क्योंकि आप फिर ताकत में आ जाएंगे, सच्चाई पे आ जाएंगे। अभी आप छुप रहे हैं झूठ के लिए,
क्योंकि आप बचना चाहते हैं, इसलिए चुप रहे हैं। और जो हिम्मत वाला नहीं होता मैं उसके साथ नहीं होता, उसको मारता हूँ। और जो हिम्मत वाला होता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बताइए, जितने पैदल गए कितने मरे? भूख से मर गए अलग बात है, ब्लड प्रेशर से मर गए अलग बात है, कोरोना से नहीं मरे, वो नहीं मरे, एक भी नहीं मरा कोरोना से। स्प्रे कर रहे हैं आप कीड़े मकोड़े उनके ऊपर, वो दवाई, शर्म नहीं आई? मतलब आपने कीड़े मकोड़े समझ लिया उन गरीबों को, कीड़े मकोड़े समझ लिया आपने मेरी चीज़ों को जो मैंने बनाई। आप बहुत बढ़िया हैं, इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, ज़्यादा अपनी घमंड को निकाल दो, अभी भी समय है। अभी मैंने कुछ नहीं किया है। 8 बिलियन लोग हो, कम से कम 10% का तो एक्शन होना चाहिए था, मतलब 80 करोड़ कर दो। पूछता हूँ आपसे, मैं अभी आप ही की बात लेके चलूँगा। कितने बोलो करूँ? 80 ना सही, 40 सही, आप भी शामिल होंगे, ये देख लेना उसमें एक एक छोड़ूंगा मैं आपको भी नहीं तो वार्निंग दे रहा हूँ अभी भी, समझ जाओ। पहले भी वार्निंग आई, आप नहीं समझे। हर 50 साल 60 साल में वार्निंग आती है आपको, लेकिन आप नहीं समझते। बहुत वार्निंग आई है। अभी देखो 2 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने मुझे आए हुए, लड़ रहे आपसे, डर गए। आसमान कुछ कुछ साफ हो गया, हवा कुछ कुछ साफ हो गई, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, आपको नहीं समझ आएगा। गाड़ी से नीचे उतरते नहीं, चढ़ते गाड़ी में, उतरते एसी में, गाड़ी में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, टॉयलेट में एसी, बाथरूम में एसी, किचन में एसी। मेरे से दूर रहते हो, मेरे से दूर भागते हो, जो मैंने नेचुरली आपको दिया उससे भागते हो। यही होगा, हड्डियां कमजोर करके आपको मार दूंगा मैं, रोते रहना। अपने शरीर के बारे में सोचो, जान है कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं जान है तो जहां है। आप में तो जान ही नहीं, तो जान कहां से आएगी? इस कच्ची जान का क्या करोगे? मैंने कितनी मेहनत से नेचर तैयार किया आपके लिए, आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। किसके लिए? किसके लिए? आखिर क्या पर्पस था दुर्व्यवहार करने का? लेकिन आपने किया। छोटे बच्चे जो होते सुनते नहीं है किसी की, छोटे बच्चे कभी सुनते नहीं, अपनी चलाते हैं, ये नेचुरल है। आप भी उसी में से हैं, सुनेंगे नहीं, अपनी करेंगे, पर पता नहीं किसके लिए करेंगे। छोटे बच्चे कलम के लिए, पेंसिल के लिए, रबड़ के लिए लड़ते हैं आपस में, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है, तुम्हारा है। आप भी उसी में लड़ रहे हैं, ये जगह मेरी, ये जगह मेरी, ये तेरी, ये मेरी। इसी में आपने सेंचुरीज निकाल दी, मिलेनियम्स निकाल दिए। तो आपको सजा तो मिलनी चाहिए ना। जब मैंने सीधी बात कही है, सबके लिए खाना है, सब खा सकते हैं, क्यों लड़ते हो? बात ही समझ नहीं आती, बात समझ नहीं आती। सब अच्छी भली जिंदगी को आपने नरक बना दिया। अगर ये सोचिए, सब साफ होता, हवा साफ होती, पानी साफ होता, सब कुछ होता, तो क्या मैं आता? मैं कभी नहीं आता, क्योंकि मैं इसी की तो पैदाइश हूँ, मैं ऐसी ही पैदाइश हूँ। वैज्ञानिक को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी लिमिटेशन है, वो उतना ही जानते हैं जितना पढ़ा है, इससे ज़्यादा वो भी नहीं जानते। डॉक्टर्स भी उतना ही जानते जितना सीखा है, मुझे कोई नहीं जानता। आपकी मास्क मुझे नहीं बचा सकती, जितना मर्जी कर लीजिए आप, मुझे मास्क नहीं रोक सकती, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपका व्यवहार मुझे रोक सकता है। जितना डरोगे मैं उतना मरूंगा, सीधी सी बात है। खुल के रहोगे मेरे सामने, ईमानदारी से रहोगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं शुरू से था, अब भी हूँ, जाने वाला नहीं हूँ। आप सीधे हो जाएंगे, मैं चला जाऊँगा। अब आप सोच लो कि आपको क्या करना है। मेरा आपको संदेश यही है, रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, रिस्पेक्ट नेचर, डू नॉट स्पॉइल नेचर, बिकॉज नेचर इज माई क्रिएशन, नॉट योर क्रिएशन। यू आर माई क्रिएशन, अर्थ is my creation, solar system is my creation, universe is my creation. You are nowhere.
यू आर जस्ट लाइक ए स्टोन चिप्स, जस्ट लाइक ए बबल ऑफ वाटर, नथिंग एल्स। पता नहीं क्या समझ बैठे अपने आप को, क्या समझ बैठे अपने आप को आप लोग। इसलिए पाठ सीख लीजिए, अभी भी समय है। इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। ये एक मैसेज था मेरी तरफ से आपको। बार बार ये मैसेज आता रहेगा जब तक आपकी आंखें और दिमाग नहीं खुलता। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पे सबका हक है। जो भी इस ज़मीन पे रहता है उसका हक इस ज़मीन पे है, चाहे वो कोई भी हो। जो हक छीनेगा उसको भुगतना पड़ेगा। मैंने ज़मीन पे भेजा है आप सबको, एक को नहीं, दो को नहीं। आप ज़बरदस्ती अपने अपने कब्जे करके बैठ गए। दुनिया एक है, 200 नहीं। आपने ज़बरदस्ती 200 बना दी। मैंने तो नहीं कहा था, आपने बना दी। मेरे सिलेबस में ये नहीं था, लेकिन आपने बना दी, क्योंकि आप सुनते नहीं किसी की। मेरे लिए आप मज़दूर हैं, मैंने आपको मज़दूरी करने भेजा, बोला आप जाइए ये काम करिए, वो नहीं करते। आप अपनी पावर में बैठ जाते हैं, मालिक बन के बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। आप ये भूल जाते हैं, और जब मैं वापस लेता हूँ अपने आइटम को तो आप रोने लगते हैं, मर गया। कोई मरता नहीं है। मैं अपनी आइटम वापस ले लेता हूँ, उसको रिफाइन करके फिर भेज देता हूँ। आपको ये बात समझ नहीं आती। पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जो मैंने काम दिया वो नहीं करते। अपने परिवार को बनाने में लगे रहते हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ वो नहीं करते। अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं कि मेरी जो कि दुनिया आपकी है नहीं। यही मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा इन चक्रों से बचिए। इतना ही आपके लिए सही रहेगा। और आप अपने को अपनी जगह समझ के बैठेंगे तो तरह परेशान होंगे, परेशान रहते रहेंगे, बिल्कुल रहते रहेंगे। मैंने ऐसा कुछ था नहीं जो आपको नहीं दिया। खाने का, पीने का, रहने का सब कुछ मैंने दिया आपको। ये बात आपको समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों। मैं भी नहीं समझ पाया आज तक। मैं नहीं समझ पाया कि आप कौन हो, कैसे बन गए, कहाँ से बन गए, जबकि बनाया मैंने। शायद मेरी मेमोरी भी कमज़ोर हो गई है आपकी वजह से। यही मैं कहना चाहता था। अभी ज़्यादा मरे नहीं, जबकि मैंने मारा भी नहीं है। वो सोच रहे मरेंगे, वो कहते हैं 2 लाख तो मर ही जाएंगे। सोचिए आप, अमेरिका वाला क्या कहता है, 2 लाख तक तो मरेंगे। अगर मान लीजिए वो उनकी बात मान लेते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। ट्रंप खुद कह रहा है 2 लाख तक मर सकते हैं। चलिए हम ट्रंप की बात मान लेते हैं। इसका मतलब अगर आप 5% लगा लीजिए, जितने बीमार होंगे वो मरते हैं। 5% अमेरिका कंट्री है, साफ कंट्री है, मानते हैं, ज़्यादा रश नहीं है। अगर 5% के हिसाब से लगा लो, 2 लाख का 20 गुना कितना हो गया, 40 लाख। मतलब करीब करीब आप कह सकते हैं 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट होने वाला है। दहशत होती है सुन के, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। मैं कितने मारूंगा मैं नहीं बताता, लेकिन इतना तो इफेक्ट होगा। मतलब आज सोचिए उनकी आत्माएं कैसी रही होंगी लोगों की जो आज अमेरिका में हैं। क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं कब आएगा, घुस जाओ रजाई में, घुस जाओ रजाई में, कुछ नहीं होगा उससे। मैं तो बैठा हूँ, मुझे ना रजाई रोकेगी, ना आपकी लकड़ी की, आप ईंट की दीवार रोकेगी, मैं तो आ जाऊँगा। आप क्या सोचते हैं मैं निर्वाह से डरता हूँ? मैं किसी से नहीं डरता। मैं भूत का भी बाप हूँ, आत्मा का भी बाप हूँ। मुझसे कोई नहीं भाग सकता। इसलिए सिंसियर बन जाओ, यही काफ़ी है आपके लिए। आप लोग डरे रहिए, और जो डर जाता है, डायलॉग आप जानते हैं, जरूरत नहीं है बताने। आज आपको थोड़ी थोड़ी तो अकल आ रही कि दूसरों को तंग ना करें, या अभी ना करें, बाद में करेंगे। चाइना को इल्जाम लगाते हो, लगाइए, क्या फर्क पड़ेगा। अपने को देखो, आपने क्या किया, अपनी हिस्ट्री को खोलो, आपने क्या वैल्यू दी इंसान को। देखिए कुछ ही समय पहले आपने क्या किया था
किया था या नहीं किया था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हर एक का सामने आता है, आएगा। आपका अकाउंट, करंट अकाउंट चल रहा है अभी फिक्स डिपॉजिट में नहीं गया है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन पूरी करनी पड़ेगी। कितने मारे थे आपने इराक में, हिसाब है? झूठ पे मारे थे ना, आपका कोई हक नहीं था वहाँ पे, आपका कोई लेना देना नहीं था वहाँ से, लेकिन आपने मारे, बिना बात मारे। लड़ाई कुवैत से थी उसकी, आप क्यों बीच में आए थे? कितने मारे आपको हिसाब है? आपने उस देश का बर्बादी कर दिया, आज भी उठा नहीं और अपने आदमी बिठाते गए उसके ऊपर। भुगतना तो पड़ेगा। लीबिया को किसने खराब किया? आपने खराब किया, आप ही जिम्मेदार हैं उसके, आपको उसका फल तो मिलेगा। दोनों कंट्री अच्छी थी, आपको पसंद नहीं था, क्योंकि जो आपके पैर न छुए वो ठीक नहीं, जो आपके पैर छुए, आपकी मालिश करे, वो सही है। तो ठीक है, अब मैं मालिश करता हूँ आपकी अच्छी तरह से, तैयार रहिए। आपने उन गरीबों को मारा, उन करोड़ों गरीबों को मारा आपने, किसके लिए? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए। बताइए कितने मिले आपको? और आप कौन होते थे मारने वाले? आप कौन होते हैं किससे पूछने वाले कि आपके पास वेपन है तो दे दीजिए मुझे? आपके पास वेपन नहीं है क्या? आपका किससे कॉन्ट्रैक्ट है कि आप तो वेपन रखेंगे, दूसरा नहीं रखेगा? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? पर आपने खुद ही डिसाइड कर लिया, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया, मैं आपका एनकाउंटर करता हूँ, रोक लीजिए मुझे। बड़े बड़े आपके वैज्ञानिक बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, रोकिए। हिस्ट्री देख रहे हैं, देखो पहले भी था, आप कह रहे हैं पहले भी था, कभी कहते हैं बायोलॉजिकल है, कभी कहते जेनेटिक। अब देखिए कौन सा हूँ मैं, आपके कहने से नहीं मैं बनता, मैं किधर से भी आ जाऊँगा। क्या करेंगे आप? चलाइए जहाज, अब चलाइए अपने रॉकेट, चलाइए, जाइए चांद पे, अब आप जाइए। जमीन संभलते नहीं आपसे, तूफान संभलता नहीं आपसे, भूख संभलती नहीं आपसे, जरा सी फ्लड आ जाए तो रो पड़ते हैं आप। मुझसे लड़ेंगे, औकात है? सारी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसे ही हो रहा है। चाइना वाला अपने आप को समझता है, आप लड़ रहे 3 साल से, मैंने कुछ नहीं कहा, एक दूसरे से खामखा लड़ाई किए जा रहे हैं, बिना मतलब बहस किए जा रहे हैं, जबकि आपका कुछ है नहीं। आपको क्या लेना है चाइना के समुद्र से, जरा बताइए मुझे। और चाइना वाला अपनी हेकड़ी दिखाता है, जबकि दोनों में कुछ भी नहीं है। आप अपनी अपनी हेकड़ी दिखा के तूने क्या बर्बाद कर दिया, अपनी इकोनॉमी खराब कर दिया आपने मेरे देश को की। लोगों पे रोटी खाने को नहीं है। आप देखिए, हाँ क्या हो रहा है, सब खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सब खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। नौकरी जा रही हैं, काम जा रहे हैं, धंधा जा रहा है, रोटी नहीं है, और कमरे में घुस गए अलग से। सोचते हैं कि 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते बंद रह के मुझे भगा दोगे। आप 10 साल भी कमरे में रहेंगे, मैं तब भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। मैं आपके दिमाग में हूँ, मैं आपके दिल में हूँ, मैं आपकी आत्मा में हूँ। उसे कैसे रोकोगे? मैं आत्मा में घुस के मार करता हूँ, बचेंगे आप? नहीं बच सकते। आत्मा तो आप समझते ही नहीं हो क्या होती है। ये समझते तो बात नहीं होती ना। मुझे सच आदमी का साथ देना है, झूठ का नहीं देना। जिनको आप मार मार के रोज खाते हो, वो भी मेरे बनाए हुए हैं। आपको तब दुख नहीं होता जब मार के खाते हो उनको। आपके कुछ लोग मर गए तो दुख हो रहा है आपको, और भाग रहे उससे भी। हाथ नहीं लगाना, परे कर दो, हमको इन्फेक्शन ना हो जाए, इतना डर। और वो जो पढ़ लिख के डॉक्टर आए, उनके लिए आपका ख्याल नहीं है, वो भी मर रहे हैं इसी वजह से, आपकी कमजोरी की वजह से। आपने उनका भी ख्याल नहीं किया। एक डॉक्टर के बदले में 1-1 लाख को मारूंगा, याद रखने। क्या समझ के बैठे हो? लीडरों को मैं नहीं छोड़ूंगा,
बहुत क्राइम किया इन लोगों ने, और मेरा पहला हमला इन्हीं पे होना है। इनसे मैं आत्महत्याएं भी कराऊंगा, इनको मारूंगा भी मैं, और इन गिरोहों को मारूंगा मैं। बहुत पाप किया इन लोगों ने, रोटी भी नहीं खाने देना चाहते, लोगों को लूटना चाहते हैं। मैं क्या बताऊं, मैं भी कई बार रोता हूं, क्योंकि मैं अपनी गलती पे रोता हूं। मैंने क्या किया, ये किनको बनाया मैंने अपनी मेहनत से, और ये मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मारना चाहते हैं मुझे। आप पूरी दुनिया में घूमते हो, मैं ना घूमूं? आप तो घूमे दुनिया में, आप जाएं जहाजों में, आप रहें होटलों में, आप करें डांस, शराब पिए, सब कुछ करें, और मैं कहीं जा रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपसे तो मैंने कुछ नहीं लिया, अपने आप जा रहा हूं, अपने आप जा रहा हूं मैं, आपसे मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे आपके वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों परेशान है? सोच ही लीजिए, मैंने कहाँ पे वार किया? मैंने उनको नहीं मारा जो पहले ही मरे हुए हैं, उनको मैंने कुछ नहीं कहा। जिम्बाब्वे को मैंने कुछ नहीं कहा, औरों को मैंने कुछ नहीं कहा। उनके पास तो पानी भी नहीं पीने के लिए, मैं उनका क्या करूँगा? उनको आप अपने देश में घुसने नहीं देते रोटी कमाने के लिए, इतना घमंड। अगर कुछ लोग वहाँ मर रहे हैं, पीट के निकाला जिनको जा रहा है, तो आप अपने देश में भी नहीं घुसने देते उनको। पड़े रहो समुद्र में, मर जाओ, आपके बाप की ज़मीन है। मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन मैंने दी आपको, और आप अपना राइट बना के बैठ गए, उसका फल तो मिलेगा। मेरी बातों को आप याद रख लेना, बेशक आप कुछ भी कहते रहना, सच नहीं छुपता कभी भी, याद रख लेना। सच कभी नहीं छुपता, सामने आता है, आप जल्दी भूल जाते हैं। समय आ गया है, अब आपको सीखना पड़ेगा। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हो तो कर लो अभी भी। मैं कंसेशन दे दूंगा, कंसेशन दे दूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, पर आपको डेबिट कर दूंगा मैं आपके अकाउंट में। लेकिन नहीं मानोगे तो यात्रा भी समाप्त कर दूंगा आपके, यात्राएं समाप्त कर दूंगा मैं आपकी। जाओ वहीं जाओ जहाँ से आए थे, दोबारा वहीं फंसो जाके। मैंने आपको चार्टर दिया था कि जाइए, कुछ करिए वहाँ पे, आराम कीजिए कुछ साल। आपको पसंद नहीं है, क्या करूँ मैं? अब यही होगा। ये तो मैंने छोटी सी ज़मीन बनाई थी, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी ज़मीन है आपकी जिस पे आप रहते हो। आपको पता है? नहीं पता आपको? अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। बड़े बड़े प्लैनेट बैठे हैं, मैंने उनका कुछ नहीं किया अभी। इतनी सी ज़मीन जिसको मैं अपनी उंगली पे उठा सकता हूँ, उस पे इतना आप कर रहे हैं। मेरे लिए कुछ नहीं है। सूरज से मिला के देखो अपना साइज, आपका कुछ नहीं है साइज, बहुत छोटे हो। अगर आप सूरज पे खड़े हो जाएंगे ना, आपको 2 मिलीमीटर दिखाई देगी ज़मीन, 2 मिलीमीटर, मतलब दिखेगी भी नहीं आपको वहाँ से। ये आपकी औकात है, आपकी वही औकात है। सड़क पे चलते हो और चींटियाँ मरती रहती हैं, वही औकात है आपकी, चींटी औकात है आपकी। फिर भी इतना नशा, फिर भी इतना नशा ख़राब कर दिया आपने मेरा सब कुछ। मुझे शर्म आती है ऊपर वाले जब मेरे को टीज़ करते हैं, कहते हैं तुमने किया था ना, देख लो क्या कर रहे हैं लोग। खैर, ज़्यादा लंबी बात करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। दोबारा बात करूँगा, टेस्ट करूँगा आपको मैं, ये मेरा काम है। और अब जो सही है और जो गलत है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लीजिए। मुझे अच्छा लगा वैसे देख के कि देखिए कुछ ही हफ्तों में क्या नज़ारा चेंज हो गया पूरे विश्व का। फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, देखिए ऑटोमेटिक फिल्म बन गई। फिल्म मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब गायब। वो हसल पसल, रश, भाग दौड़, इधर उधर, हजारों फ्लाइटें आसमान में, सब डिसअपियर हो गई मेरे जरा से एक्शन से। कमाल हो गया अभी। इतने शेर दिल वाले, इतने हंगामा करने वाले, खून खराबा करने वाले एकदम भाग गए। कहाँ भाग गए? घुस गए घरों में। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। मतलब मैंने आदमी बनाया, लेकिन हिम्मत नहीं दी उसको शायद
ये गलती रह गई मेरी। उनकी आत्मा को मैंने मजबूत नहीं किया, ये शायद मेरी गलती रह गई। उनको मैंने वो शक्ति नहीं दी, दी भी होगी शायद, वो ले नहीं पाए, नशे में रह गए, सुख के नशे में, शायद ये रह गया। मैंने कहा था जाएंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, काम करेंगे, इसको बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे ज़मीन, लेकिन ये तो अपने आप को अच्छा बनाने में लग गए। मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा मेकअप कैसा है। आप मेकअप से सुंदर बनना चाहते हैं, शरीर से नहीं, कमाल है। आप दिखावा करना चाहते हैं, हकीकत नहीं। आप दूसरे की मेहनत पे खाना चाहते हैं, अपनी पे नहीं, कमाल की बात है। जो मेहनत करता है उसको आप मारते हैं और उसका छीन लेते हैं, दूसरे की चीज़ छीन लेते हैं। जो अपने को पावरफुल समझता है, दूसरा थोड़ा डरपोक हो जाता है तो उसको आप तंग करते हैं। ये कब तक चलेगा, जबकि आप में कोई पावरफुल है ही नहीं। मेरे सामने सब बिल्ली हो, कुछ नहीं हो, फिर भी अभी तो मैं थोड़ा सा हूं। आपकी सांस की नली पकड़ना चाहता था, सबकी नहीं पकड़ रहा, मैं कुछ कुछ की पकड़ रहा हूं, और छोड़ूंगा नहीं उनको मैं, क्योंकि उन्होंने हराम की खाई है हमेशा, मेहनत की नहीं खाई। जो मेहनत की खाएगा वो मेरे हिसाब से आगे जाएगा, और जो नहीं मेहनत की खाएगा वो इसका यही होगा। अजीब बात है, कोई किसी को खाना खिला रहा है और नाम कोई और ले रहा है। झटका लगता है जान के मुझे। मतलब आप नाम भी लेना चाहते हैं मुफ्त में, मेरा नाम हो जाए, मैंने ये किया। या आपने कुछ नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, आप यहाँ तक कि सोच भी नहीं, पर नाम अपना चाहते हैं। यही होता है इस दुनिया में, क्योंकि जो काम करने वाला आदमी होता है उसके पास समय नहीं होता है सोचने के मैं किसी को तंग कैसे करूं, और जो कुछ करता नहीं है वो ये सोचते मैं दूसरे को कैसे छीन लूं। यही मॉडर्न वर्ल्ड है, यही मॉडर्न वर्ल्ड है। हम दूसरे का छीनते हैं अपने फायदे के लिए। वो मरता है तो मर जाए, कोई बात नहीं। इसलिए होश में आ जाओ। सबको तो खैर नहीं मारूंगा, लेकिन जिसका हाथ मैंने लग दिया वो बचने वाला नहीं है। अभी तो मैंने ट्रायल लिया है, अभी तो प्रोबेट कर रहा हूँ मैं कौन कौन कहाँ कहाँ है, कैसा है, क्योंकि 10,000 15,000 20,000 मेरे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इससे ज़्यादा मैंने किया भी नहीं। मैंने तो वैसे ही मरते हैं लोग, कोरोना नहीं होता तब भी मरते हैं। बस एक साइकोलॉजी क्रिएट कर दी गई है, एक दिमाग में भूत पैदा कर दिया है मैंने कि डरते रहो डरते रहो डरते रहो, और जो डरेगा आज की तारीख में वो मरेगा ही मरेगा, याद रखना। आज नहीं तो कल मरेगा, ये निकलने वाला नहीं दिमाग से। मैं चला भी जाऊंगा तब भी आप डरेंगे। आना जाऊंगा कहीं से, आ गया पीछे मुड़ के तो देखो आ तो नहीं गया भूत, वही होगा। और जो नहीं डरेगा उसके पास कोरोना कभी नहीं आएगा। डरपोक के पास आता हूँ मैं, उसकी हिम्मत देने के लिए, अगर वो हिम्मत ले तो मैं किसी का क्या बिगाड़ूंगा, मैं तो खुद कमजोर हूँ, मैं क्या किसी का बिगाड़ लूँगा। कोई कहता है 80 डिग्री पे मरता हूँ मैं, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं रिपोर्ट। 80 डिग्री पे मरता, पता किसी को कुछ नहीं है, रिपोर्ट निकाल देते हैं। कोई कहता है मॉइस्चर से नहीं मरता मैं, कोई कहता है इससे नहीं होता। उन्हें पता नहीं कि मैं हूँ क्या, तो वो अपने आप बता देते हैं मैं किस पे मरता हूँ किस पे मरता हूँ। और वैज्ञानिक कहने लग गए हैं कि मैं तो जानवरों के थ्रू आया हूँ आदमियों में। अरे आदमी भी तो जानवर है, कौन सा आदमी आदमी है आज? आदमी और जानवर में क्या फर्क है? आदमी भी भौं भौं करता है, सोचता नहीं है दुनिया के बारे में। सोचता होता तो ये काम नहीं होता। जानवर को तो खाली रोटी चाहिए। बता दो कौन सा जानवर कपड़े मांगता है, कौन सा जानवर महल मांगता है, कौन सा जानवर कहता है कार में ले जाओ मुझे? कोई कहता है? वो तो पैसे वाले ले जाते हैं दिखाने के लिए। कुत्ते भी कार में, मकान में रखते हैं कुत्ते बिल्ली, रखो तो उसकी जो वाइब्रेशन होगी आपको तो आएगी। कैसे बचेंगे आप?
कुत्ते आप पालते हैं, गरीब के लिए रोटी नहीं है आपके पास, पालिए कुत्ते। उन कुत्तों को देख के सड़क वाले कुत्ते भौंकते हैं, अमीर कैसे कुत्ता आ गया। दुनिया ऐसे ही चल रही है। आपको कुत्ते पालने का शौक है, गरीब को रोटी देने का शौक नहीं, मजदूर के पैसे मारने का शौक है आपको। काम करा लो, पैसे मत दो। क्यों भाई? काट लेंगे पैसे, काटो पैसे उसके, हम आप काटो। यही होता है। जितना बड़ा आदमी उतना गंदा आदमी। अपनी मेहनत से कुछ नहीं करना, दूसरे की मेहनत से इकट्ठा कर लो, कमा लो। बताइए जितने बड़े लोग बने हैं आज की तारीख में, किसने मेहनत से काम किया है? कितने % मेहनत का पैसा उनके पास? दूसरों को लुटाई पैसा है। बड़े बड़े बैठे हैं आज की तारीख में, दुनिया में पूरी में, किसके पास अपनी मेहनत का पैसा है? घपले करके वैसे कमाए हैं सबने। मेहनत का पैसा कभी इतना नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मेहनत करे मजदूर, गरीब, खून पसीना बहाए धूप में, प्रॉफिट ये ले लें। प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए। उसको रोटी भी नहीं देंगे, उसको कपड़े भी अच्छे नहीं देंगे, उसको दवाई भी नहीं देंगे, बाहर निकाल देंगे। 21 दिन की रोटी नहीं थी उनके पास, उनको देने के लिए धक्के मार के निकाल दिया, जाओ। 21 दिन खाना नहीं दे सकते आपको, रहने भी नहीं देंगे आपको। वाह वाह। मरने को तैयार हो, मौत के मुंह में खड़े हो, कब्र में जाने वाले हो, उसके 21 दिन का खाना आपके पास नहीं था, निकाल दो नौकरी से, जाइए आज काम नहीं है। आप इतने गरीब हो गए। अरे करोड़ों रुपया कमा रहे हो उनसे आप, उनके पास 2 रोटी 21 दिन के लिए आपके पास नहीं थी। तो यही तो टेस्ट है। उनके पैसे भी आपने नहीं दिए, जाइए बाद में ले लेना। मतलब आपको उनके पैसे भी चाहिए। चैरिटी आप करेंगे दिखाने के लिए। किसको चैरिटी चाहिए आपकी? अभी देखिए पंडितों को लिख के दे रहे हैं, हम गरीब हो गए, 21 दिन में खाना नहीं है हमारे पास। पंडित गरीब हो गए, मंदिर वाले, हाँ पंडित गरीब हो गए, जो कभी मेहनत नहीं करते, कभी कोहलू के बैल नहीं बनते। वो लिख रहे हैं जी आज खाने को नहीं है हमारे पास। पंडित को भूख लगी है, गरीब को नहीं लगी, जो मेहनत करता है उसको भूख नहीं लगी, फेंक दो सड़क पे, जाने दो, मारने दो। यही तो एग्जामिनेशन है सबका। आपके मंदिर नहीं होते अगर ये गरीब नहीं होते, आपकी मस्जिदें भी नहीं होती, आपकी फैक्ट्री भी नहीं होती, आपकी इंडस्ट्री भी नहीं होती, आप भी नहीं होते। याद रख लेना, जिस अस्पताल में पैदा हो ये गरीब ही बनाता है। कोई टाटा बिरला उसके सामने मजदूरी नहीं करता। मैं इन्हीं के अंदर जाके काम करता हूँ, इनसे मेहनत कराता हूँ, तब आप जिस बिल्डिंग में रह रहे रहते हैं। और जो बड़ी बड़ी स्पीचें देते हैं बड़े बड़े मंत्री, जिन बिल्डिंगों में रहते हो वो भी इन्हीं की बनाई हुई है। किस बात की हिकड़ी आप में? सबको टेस्ट में लाऊंगा, ऐसी ऐसी कंप्रेशन टेस्ट करूंगा, टेंशन टेस्ट करूंगा, सबकी के देखते रह जाना। चेहरों के मैं सारे फेस बदल दूंगा। क्या समझ के बैठे हो? हराम की खानी है आपको। जाओ धूप में खड़े हो, देखो धूप का क्या असर होता है। जब 45-50 डिग्री होती है तो नानी याद आ जाती है बड़े बड़ों की, लेकिन ये उसी में काम करते हैं। कभी खड़े होकर देखा है 1 घंटा धूप में? कभी गए हो गाड़ी से उतर के कि जाए आज 1 घंटा धूप का देखते धूप में क्या होता है? कभी खड़े हुए हो? नहीं खड़े हुए, ये खड़े होते हैं। कभी डस्ट स्टॉर्म देखा है कि डस्ट का स्टॉर्म क्या होता है? कभी नहीं देखा, ये देखते हैं। आराम आपके लिए और मेहनत इनकी, मजे आप लें, ये रोटी भी ना खाएं। वाह क्या है? वो आरती दौरान झूठ बोल बोल के मंदिर में आपके पैसे लेने मुफ्त के, और कह रहे रोटी नहीं हमारे पास। आपके पास तो रोटी नहीं है, 7 दिन में मर गए आप। और जिसे जिंदगी बिता दी मेहनत कर करके, उसकी तो सोच नहीं है आपको। मैं हर एक का टेस्ट ले रहा हूँ आज। किसी भी देश का मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबका टेस्ट है। बड़ी हरामखोरी की आप लोगों ने, बहुत हरामखोरी की। और ये गल्फ वाले सब खा गए बेच के तेल, बन गए। आज कह रहे हैं इतने अरब की पेनल्टी लगेगी, इतने करोड़ की पेनल्टी लगेगी। अरे तुम्हारे कहने से लग जाएगी?
जिसके पास है नहीं तो कहाँ से लोगे उससे? इतने बाहर आ गए तो इतने मिलियंस का टेस्ट है, इतने लाख का जुर्माना, क्या आपके कहने से हो जाएगा? तो इतना इतना गुस्सा, इतना डर मरने से। मैं सक्सेसफुल को मैं डरा दिया सबको, डरा दिया। अगर मैं सीधा मारता तो शायद मैं भी फेल हो जाता। और ये डर निकलने वाला नहीं है। डरते रहना, आप हर बात से डरते रहना। बार बार मैं आऊँगा, किसी और रूप से आऊँगा। पहले मैं हल्का हल्का आता था, आप बचते रहते थे। जब तक आप मेरे लिए लड़ाई के लिए कंप्लीटली तैयार नहीं होंगे तब तक मैं आऊँगा। जिस दिन आपने मेरे काट शुरू कर दी मैं भाग जाऊँगा। ये नेचुरल है। फिर मैं कुछ और बन के आऊँगा। ये कहानी नहीं है, ये कविता भी नहीं है, ये सच्चाई है। इंसान का डर, मानव का डर, यू लैक वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वीकनेस, इट इज वीकनेस। आई एम टेलिंग यू योर वीकनेस बिकॉज यू आर वेरी लो प्रोफाइल सोल। शरीर वरीर कुछ नहीं होता, सोल होती है, आत्मा होती है। आपकी आत्माएं मरी हुई हैं, जबकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आपकी आत्माएं डाउन है, माइनस पे है। मैं चाहता हूँ, गरीब तो स्ट्रांग है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। उसकी तो खाने की और भूख की चिंता है मुझे। आपके एग्जिस्टेंस की चिंता है मुझे, क्योंकि आप नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। मैं चाहता हूँ आप भी हो और वो भी हो, क्योंकि उनके पास पैसे की शक्ति नहीं है, उनके पास इन्वेस्टमेंट का, बिजनेस का दिमाग नहीं है। वो कर नहीं सकते मैनेज, क्योंकि वो मेहनत कश लोग हैं। लेकिन वो आपसे बड़े हैं, याद रख लेना। आपसे छोटे नहीं हैं वो। मैं चाहता हूँ उनकी सेवा आप करें बड़े बन के उनसे। पैसा आपके पास है, पावर आपके पास है, जो कि आसान नहीं है चेंज करनी आज की तारीख में। आपने सब इतने बाजी घपले किए हुए हैं हर देश ने अपनी पावर को रखने के लिए। आज मुझे आप बता दीजिए, दुनिया में जितने भी राजनीति करने वाले हैं, किसी भी देश को क्यों ना हो, कौन ऑनेस्ट है उनमें से? एक भी नाम बता दीजिए। एक भी नाम हो दुनिया में, पूरी कंट्रीज में, जो ऑनेस्ट कह सकता है कि मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ उस कंट्री का, मैं ऑनेस्ट हूँ। एक भी नहीं मिला मुझे, एक भी। हर आदमी घपलेबाज है। हर आदमी अपनी सीट पे रहना चाहता है, वो ये भूल जाता है कि मुझे मरना भी है। चाइना वाला अपनी सीट पे बना बैठा बन गया, मैं कभी जाऊँगा नहीं यहाँ छोड़ के। पुतिन उसी रास्ते पे जा रहा है, और पता नहीं क्या क्या लोग सोच रहे हैं। जैसे सीट को ये बचपन में अपने साथ बर्थ में लेके आए थे, जन्म हुआ था तो इस सीट के साथ इनका हुआ था, और ये इस सीट पे हमेशा बने रहेंगे। ये चीज़ हो रही है दुनिया में। अमेरिका वाला कहता है मैं सबका मालिक हूँ। उसने तो यहाँ तक कह दिया था मैं कोरोना प्रेसिडेंट हूँ। वो ट्रम्प, याद है? डू यू रिमेंबर मिस्टर ट्रम्प? You are Corona president, so now you are real Corona president. I am there for you. You are my president. Lead me. Tell me what I have to do. Mindless you are, Mr. Trump. माइंड आपका खराब हो गया है। एक वो पुष्ट था, भुस भर गया था वो दुनिया में, मार मार के वो क्या कर लेगा अभी मेरा? सब एक से हो, सब एक से हो। निक्सन ने भी कहा था मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, डंडा मार दिया था उसको इंदिरा गांधी ने। मैं इंदिरा गांधी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सुना दिया था उसने उसको, क्या है तेरी औकात? हम एंशिएंट कंट्री है, तो कल का पैदा हुआ बच्चा है। और सच बात है। ठीक है, आप लोग तरक्की कर गए कंपैरेटिवली, इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिक बन गए सबके। मेरे मालिक बनना चाहते हो? मेरे पर रिसर्च करो, रिसर्च मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। करते रहो रिसर्च। मैं कुछ बताऊंगा तो मिलेगा ना। आप जानते हो रिसर्च क्या होती है? जिस पर रिसर्च की जाती है, अगर वो रिसर्च कराना चाहता है अपनी, तो वो सब बता देता है मैं ये हूँ, उसी को रिसर्च कहते हैं। इनको क्या पता, अपने आप कहते मैंने सोचा, मैंने तुमने क्या देखा यार? मैं चाहूँगा तो आप मुझ पर रिसर्च करेंगे, मैं नहीं चाहूँगा तो नहीं करेंगे, मेरी मर्जी है। अभी तक आपको ये बात समझ नहीं आई। अगर आपको ये बात समझ आ गई होती तो आप सुधार लेते अपने आप को। आज भी नहीं सुधार पा रहे अपने आप को। मैं इशारा दे रहा हूँ कि देखो, सीधी जिंदगी जियोगे तो आसमान भी साफ हो जाएगा, हवा भी साफ हो जाएगी। इटली की कैनाल साफ हो गई, सुना होगा आपने। वेटिकन में जो कैनाल जाती है शिप को, जो ट्रांसपोर्टेशन के काम आती है, उसका पानी काफ़ी साफ हो गया।
क्योंकि जो पहले टर्बुलेंस होती थी पानी में, जो नीचे उसके जम जाती थी मिट्टी, वो ऊपर आ जाती थी और टर्बिडिटी बढ़ जाती थी, गंदा सा पानी दिखता था, जैसा आपकी गंगा नदी का दिखता है, यमुना का दिखता है, वहाँ भी दिखता था। अब सब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, सब सेडिमेंटेशन हो गया, सब पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, तो पानी साफ सा लग रहा है। अब सब एयर की, सब एक हफ्ते से 15 दिन से जा नहीं रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा रही एयर में, मिथाइन नहीं जा रही, मिथेन नहीं जा रही, कम जा रही, धुआं नहीं जा रहा, आसमान भी थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है। यही तो मैं चाहता हूँ कि आसमान, हवा भी साफ रहे और आप भी साफ रहें। तो थोड़ी सी सेक्रीफाइस तो आपको करनी पड़ेगी अपने सुखों की। आप ये सोचिए, आपको रोटी चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, आपको रहने को जगह चाहिए, और क्या चाहिए आपको 35 करोड़ गाड़ी इस देश में क्यों चाहिए, आपको 2 बिलियन गाड़ी इस दुनिया में क्यों चाहिए, आप खुद फैसला कीजिए, मैं थोड़ी फैसला करूँगा। आज आप कार इंडस्ट्री वाले कार बनाने के नहीं सोच रहे, क्या हो गया उन्हें? वो क्या बनाने, मास्क बनाने की सोच रहे हैं, वेंटिलेटर बनाने की सोच रहे हैं। सोचिए, कार से नीचे नहीं उतरते, कार से नीचे नहीं उतरते, शर्म आती, इज्जत का सवाल है, स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। बच्चे छोटे छोटे अपना बस्ता नहीं उठा सकते, क्या उठाएंगे जिंदगी में? अपना किताब होती है जिसमें इतना बस्ता होता है, उसको उठा के बच्चा नहीं चल सकता। आप उसको इतना आरामप्रस्त बनाना चाहते हैं, बनाइए। वो फौज में जाके गोली चलाएगा, वो खेती पे काम करेगा? नहीं करेगा। उसको भी कंप्यूटर में बैठ के टिक 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 करनी होगी, बस यही चाहता है। तो वो नहीं होने वाला। मेहनत तो आपको करनी होगी अगर आपको जीना है तो, नहीं तो आपका यही होगा जो हो रहा है। मैं हिटलर का भी बाप हूँ, याद रख लेना। हिटलर तो कुछ नहीं मेरे सामने, वो तो पड़ा एक कॉर्नर में बिठा रखा, उसको पीट पीटते मार रखा उसको। उसका तो बहुत बुरा हाल है, इलाज भी नहीं कर रहे हम उसका। वही रावण का हाल हुआ है, सबका हाल हुआ है, कोई बचेगा नहीं। बड़े बड़े हो गए और मैं तो सीधा आपके सामने बैठा, अभी चांस दे रहा हूँ आपको, अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो नहीं। बस नाम मेरा आप कुछ भी ले लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरी सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत दिन से सोच रहा था, ये लोग सुनते नहीं हैं, बार बार मैं समझाए जा रहा हूँ, इनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा हूँ, ये मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं ज़मीन के लोग, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा चलो एक बार ड्रिल कर दिया जाए इनका, और मैं ड्रिल करने आ गया। अब मैं अच्छी तरह ड्रिल कर चुका हूँ सब जगह, और कर रहा हूँ, करता रहूँगा। सरेंडर भी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। लोग यूरोप वाले का दम निकला पड़ा है आज की तारीख में, जैसे किसी ने गर्दन मरोड़ दी है उनकी, जबकि कुछ हुआ नहीं है अभी। अमेरिका वाला कांप रहा है, कांप रहा है अमेरिका। जब इराक पे बॉम्ब डाले थे, दिन रात धक्का धक धक्का धक धक्का धक, तब तो नहीं डरा, तब तो नहीं कांपा। वो आदमी नहीं थे इराक वाले, वो आदमी नहीं थे, इंसान नहीं थे, मानव नहीं थे क्या? उनको मैंने नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था, तब तो नहीं तुम कांपे, तब तो नहीं कांपे तुम। लिबिया वालों को तूने मारा, वहां तो मैं नहीं कांपा, तुम नहीं कांपे। आज भी वही है, आज भी घुसे हुए वहां पे। अरे अपने दम पे नाचो ना, दूसरे का माल क्यों खाना चाहते हो? अपने दम पे नाचो, फिर देखो तुम क्या हो। आज फंसे पड़े हैं लोग, घमंड वाले लोग। स्टेट्स जाएंगे, टोरंटो जाएंगे, जाओ, फंस गए। 40 लाख भारत वाले फंसे हुए अमेरिका में। अभी कहा था ट्रंप ने 40 लाख रहते हैं यहाँ, फंसे हुए हैं। शायद परेशान होंगे अंदर अंदर, क्योंकि एक नशा था दुनिया में, अमेरिका जाके सेट होंगे सारी दुनिया को शायद। इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बने हुए हैं, नोट मिलते हैं इसलिए, बस खरीद लो दुनिया को पैसा देके। ये आदत होती है कुछ देशों की, खरीद लो, खरीदो, मुझे खरीदो, मैं भी करने को तैयार हूँ। है कोई खरीदार? लगाए मेरी बोली,
लगाए मेरी बोली कितने में मुझे खरीदना है, मैं तैयार हूँ। कोई नहीं लगाएगा, मेरे सामने आएगा ही नहीं, डरता है, एकदम डरता है, भागो दूर रहो इससे। कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे? अपने आप से भागोगे, मुझसे नहीं। अपने आप से भाग रहे हो, अपने घर वालों से भाग रहे हो। दूर रहना, मेरे साथ नहीं आना, दूर रहो। इतना डर, मरने से डर, जीने से इतना प्यार, यही है इंसान की वीकनेस। अरे जब आपने जीना ही नहीं है कुछ दिन बाद, तो क्यों परेशान हो रहे हो? फ्री माइंड से रहो, मैं क्या बिगाड़ लूंगा आपका? खामा कर डरे हुए हो, बिना बात डरे हुए। और आपके इलाज से मैं भाग जाऊंगा ऐसा भी नहीं है। रहिए आप मुझसे दूर दूर रहिए, कोई बात नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कब तक? मेरा क्वेश्चन उठता है कब तक? कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई लिमिट नहीं। आज की तारीख में किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है। कोई कहता है लॉकडाउन सक्सेसफुल आ रहा है आपका, कोई कह रहा है नहीं सक्सेसफुल। अरे जब खाना नहीं मिलेगा आपको तो फेल ही फेल है। लॉकडाउन कर लो या कुछ भी कर लो, आप खुद सोचिए कब तक जी लेंगे आप ऐसे? मुझसे कब तक भाग लेंगे? लॉकडाउन आपने कर दिया, 2 महीने कर दिया, 3 महीने कर दिया, और सभी भाग गए। खेती करने वाले, सामान बेचने वाले, हैंडल करने वाले। आपके पास सामान पहुंचेगा कैसे? आपकी मंडियों से लोग भाग गए, दुकानें तो बंद हैं। खेती वाले खेती नहीं करेंगे तो खेती का सामान उगेगा नहीं, और आप क्या करेंगे फिर? ये कहाँ से आएगा? और ये नहीं तो मैं क्या हूँ? मेरी कोई वैल्यू नहीं है, फिर आप वैसे ही मर जाएंगे। अगर खाना नहीं तो कोरोना क्या कर लेगा आपका, बताइए? खाना भी तो एक कोरोना है जो नहीं मिलेगा आपको, उसका क्या करोगे? कितने दिन बिना खाने रह लोगे? मजदूर तो तंदुरुस्त था, 200-300 किलोमीटर जाके रह गया, जाके अपने घर में घुस गया, वो शांत है, मैं चलो अपने घर तो आ गया। घर में तो आप पहले से हैं। पर भाई सोचो जरा, कब तक? आप अपने को मजबूत बना लो, मैं कुछ नहीं करूँगा आपका, बस इतना है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं ज़्यादा अब बता नहीं सकता, अपने सीक्रेट मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि कुछ सीक्रेट तो मैं भी नहीं जानता अपने, मैं भी नहीं जानता। मेरा प्रोग्राम वो दबा हुआ है, वो बता नहीं रहा मुझे क्या बोलना है। लेकिन मेरी आपसे इतनी ही वार्ता होनी थी, हो गई। बस डरो मत, डरोगे नहीं तो ठीक रहोगे। मैं ऐसे ही रहूँगा, जाने वाला नहीं हूँ। सुधर जाओ, और कोई बात नहीं। ये दहशत निकाल दो मन से, जिसमें खुले मन से रहो, होशियार रहो, हेल्थ बना के रहो, मजबूत रहो, मेहनत करो। मैं मेहनत से डरता हूँ, जो मेहनत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, जो मेहनत नहीं करता मैं उसके पीछे पड़ता हूँ। हराम के मैं खाने दूंगा नहीं, चोरी में करने दूंगा नहीं, डकैती में डालने दूंगा नहीं। यही मेरा कहना था आपसे। अब हम आगे चलते हैं, कोरोना को भूल जाते हैं। अब मजाक हो गया बहुत, आप मजाक कह लो या सीरियस कह लो, आपको देखना है। मैंने सोचा था इस तरह से बात कर दी जाए। कभी कभी कविताओं लोग गाते हैं, नाटक लोग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो कभी कभी ऐसी बातें कर लेनी चाहिए। अपने आप को रिविजिट करने के लिए अपने बैक को, अपने बैकग्राउंड को बहुत ज़रूरी होता है, वेरी एसेंशियल। अदरवाइज इट्स नथिंग। मैनेजमेंट, इट्स आल्सो मैनेजमेंट। Yesterday I was sitting in sun, some woman lady came, पैकेट बट रहे हैं बोलती, पैकेट बट रहे हैं किसके? खाने के। अच्छी बात है, बट रहे हैं, कहाँ बट रहे हैं? नहीं, 4 गाड़ियाँ गई हैं यहाँ से। कौन बांट रहा है? आंसर क्या था? मोदी जी बांट रहे हैं। अच्छा ना, चलो मोदी जी पैकेट बांट रहे हैं। मोदी जी कहाँ सुना है? मैंने न्यूज़ में सुना नहीं, मैंने उसको बोला, मैंने तो न्यूज़ में सुना। मैं सारा दिन इतने पेपर देखता हूँ इंटरनेट पे, मेरे ख्याल घंटों में देखता हूँ कहाँ से क्या न्यूज़ मिलती है, पर ये न्यूज़ मुझे मिली नहीं।
नहीं 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 है, वो मोदी जी बंटवा रहे हैं, फ़ोन नंबर है, फ़ोन पे बात कर लीजिए उनसे आप, वो जो बांटने वाला आदमी है। मैंने वो जरूरत नहीं, तो कौन बांट रहा है मोदी जी के नाम पे? रेड क्रॉस। ओ, रेड क्रॉस बांट रही है, सुन के तो अच्छा लगा, पर मैंने कहा रेड क्रॉस मोदी की कब से हो गई? नहीं 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 नहीं, वो है, वो फ़ोन करके पूछो। अब यहाँ आ जाओ, मैं अब इसकी इंटरनेट खोलता हूँ, आ जाओ। रेड क्रॉस कहाँ? आप इस वेबसाइट पे ज़रा देखिए ना, कहाँ है यहाँ? प्राइम मिनिस्टर बांटवा रहा है क्या? क्या इसमें तो उसका नाम ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो है, उन्होंने पैसा दिया है। मैंने कहा दिखाओ तो सही, कहाँ लिखा है इसमें, कहाँ पैसा दिया है? कोई आंसर नहीं था उनके पास। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, इतनी सी बात पे भी लोग ना इंटरेस्ट, क्रेडिट लेना चाहते हैं। अगर मान लो आप बंटवा भी रहे हैं तो आपकी ड्यूटी नहीं है, इस बात का शोर मचाएंगे आप। मोदी जी खाना बंटवा रहे, एहसान कर रहे हो, मान लो बंटवा भी रहे तो। अगर आप बंटवा भी रहे हैं तो एहसान है क्या इसमें? आपकी ड्यूटी है, लेकिन जबरदस्ती कह रहे हैं मेरा बंटवा रहे हैं। रेड क्रॉस से क्या लेना है मोदी को? इंटरनेशनल सोसाइटी है, ठीक है, हमारे कंट्री में बनी है, हर कंट्री में बनी है, कौन सी कंट्री में नहीं बनी है? इंटरनेशनल मैनेजमेंट है ये। इस तरह से करते हैं लोग। अरे हर बात पे आपको क्रेडिट चाहिए, हर बात पे। पता नहीं क्या करोगे उस क्रेडिट का, बिकॉज आफ्टर ऑल इफ यू आर लॉर्ड ऑफ क्रेडिट्स व्हाट शैल यू डू विद दैट? आपके अंदर सर्विस की भावना नहीं है कि हम लोगों की सेवा कर दें, वो भावना नहीं है। हर बात पे क्रेडिट चाहिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कमाल है, हर बात का आपको लोगों में ये कहना है कि मैंने किया। जब मैं बन जाती है ना, वहां फिर कुछ रहता नहीं। मैं, मेरा फेस आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। मोदी केयर अकाउंट क्या है भाई? क्या केयर है मोदी की इसमें? पैसा पब्लिक का होगा, सब कुछ पब्लिक का होगा, आपकी केयर कैसे होगी? ऑलरेडी एक अकाउंट है, प्राइम मिनिस्टर अकाउंट, उसमें भी डालते थे लोग पैसे। मतलब आपको यहां भी आपका नाम करना है। मेरे को तो बात समझ नहीं आती, अपना नाम क्यों लेना चाहता है कोई? अगर आपने काम किया है तो कोई एहसान किया है किसी के ऊपर। अगर मैं किसी का कुछ कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी समझ के कर रहा हूँ ना, उसमें मेरे को उसका एहसान चाहिए। नहीं देता कोई उसका थैंक यू नहीं, मुझे कोई कहता तो रोऊं, मुझे थैंक यू नहीं चाहिए भाई। मतलब इतनी भूख, ये इतना कमजोर हो गया मेरा पेट, हर बात का मुझे जवाब चाहिए। हद हो गई, इतना वीक इंसान हो गया। मैं तो समझता हूँ जितना बड़ा होता है आदमी उतना सही होता है, उतना सॉफ्ट होना चाहिए, उतना अपने पावर को दिखाए नहीं, उसका यूज़ करके पब्लिक को फ़ायदा उठाए। यही तो मतलब पावर का होता है। जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो कितना क्रेडिट मांग रहा है आपसे? वो तो नहीं मांग रहा। सूरज आपकी सेवा करता है, आपसे क्रेडिट मांगता है। हवा सेवा करती है, वो क्रेडिट मांगती है आपसे? नहीं मांगती। बस यहाँ हर एक को क्रेडिट चाहिए, मेरा होना चाहिए। आपके नाम से क्या हो जाएगा? आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आजकल और चल रहा है, सिलसिला फेसबुक पे, मोदी सबकी जिंदगी बचा रहा है। मैं सुन के पागल हो जाता हूँ पढ़ के ऐसे ऐसी पोस्ट। कौन किसकी जिंदगी बचा रहा है? अपनी जिंदगी का तो पता नहीं है उसको, तुम्हारी जिंदगी बचा लेगा वो। जब मौत मंडरा रही है आपके सर पे, आप जिंदगी दूसरों की बचाएंगे। अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो आपका फर्ज है, एहसान नहीं कर रहे उसमें। आपको एक्शन लेना है तो लीजिए, आपका काम है वो, आपको उस सीट पे इसीलिए तो बैठे हैं। लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं, कुछ भी बात करेंगे, धर्म भी बीच में ला रहे हैं। अरे कोरोना चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको आज भी धर्म की लड़ाई करानी है लोगों की, इसको उससे, उसको इससे। कमाल की बात है। इतना भी क्या किसी की भक्ति, इतना भी क्या किसी का पागलपन। मतलब आप वहां भी कहीं ना कहीं उसमें घुस जाते हैं, उस चीज में जो नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको क्रेडिट चाहिए हर बात का। मैं ना मोदी की बुराई करना चाहता हूँ, ना ट्रम्प की करना चाहता हूँ।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप सही बात कीजिए। आज की तारीख में पूरी दुनिया परेशान है। क्यों आप चाहते हैं कि आप सारी दुनिया को मदद चाहिए, खुल के मांग रहे हैं मदद। इटली भी मांग रही है, फ्रांस से मदद, रशिया से भी मांग रही है, वो दे रहे हैं। वो तो क्रेडिट नहीं मांग रहे, वो तो नहीं अनाउंसमेंट कर रहे दुनिया में कि हम मदद कर रहे हैं। सारी दुनिया से डॉक्टर, ट्रम्प मदद मांग रहा है। ट्रम्प जो कभी झुकता नहीं था वो मदद मांग रहा है, खुली मदद मांग रहा है। ये वक्त ऐसा है, कोई भी किसी मदद दे सकता है। आफ्टर ऑल मानवता का सवाल है, ह्यूमैनिटी का सवाल है। आप जिसकी मदद कर सकते हैं कर दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन उसको आप उसमें क्यों लाना चाहते हैं अपने की रिकॉर्ड में, ये मैंने की। आप में भगवान ने कैपेसिटी दी तो आपने की। और यही चीज़ नहीं, कहीं भी किसी भी चीज़ पे कभी भी हम कोई काम करते हैं, मान लो किसी की हेल्प कर भी रहे हैं, तो वो हम कर सकते हैं तो कर रहे हैं ना। अगर हम नहीं कर सकते होते तो कैसे करते? ऊपर वाले ने इतनी शक्ति मुझ में दी है या आप में दिया, मैं किसी की हेल्प अगर करूं तो उसमें मुझे उसके वापसी चाहिए क्या? क्यों चाहिए? भगवान चाहता होगा तभी तो मैं कर रहा हूँ ना, नहीं मैं होता कौन हूँ करने वाला? मेरे को वो रिजोर्स दिए, वो शक्ति दी, वो सोच दी, वो विल दी, तभी तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, मेरी अपनी तो कोई औकात नहीं है। जब मुझे अगले पल का पता नहीं क्या होने वाला है तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैं कुछ हूँ? जब मेरी डोर किसी और के हाथ में है तो वो कर रहा है भाई, मैं काम कर रहा हूँ। ये सोच नहीं आती हमें। मतलब कहीं ना कहीं गंद है दिमाग में, कहीं ना कहीं गंद है। जब वो खुद कहता है फल की चिंता ना करो, आप कहता है ना, फिर क्यों नहीं मानते? आप फल की चिंता करते क्यों? खुद ही कहता है, उसने भी फल की चिंता नहीं की, वो अपना काम कर रहा है। ये बातें आप समझ जाएं, जिंदगी सिंपल हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। आप सही तरह से प्रबंध कर पाएंगे अपनी लाइफ का भी और अपने काम का भी। और यही मेरी बात है मैनेजमेंट की। हालांकि अब आज की तारीख में प्रोफेशनल सब्जेक्ट पे बात करना ज़्यादा जमता नहीं है कि लोग वैसे ही परेशान हैं, लोग सारे परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान है, तो इन बातों की उतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन टाइम बहुत है लोगों के पास। आज के समय में जितना टाइम है ज़िंदगी में बार बार नहीं आता। कर्फ्यू लगे, जैसे पहले लगते थे कर्फ्यू तो टाइम 3-4, कहीं 3 दिन का कर्फ्यू था, कहीं 4 दिन का कर्फ्यू था, आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता था। उसमें लोगों के पास घर में रहना है तो टाइम मिलता था, चलो कुछ स्टडी कर लो, कुछ और कर लो, टीवी देख लो, जो भी आप कर सकते हो कर लो। आज तो लंबे कर्फ्यू है। उसका रिजल्ट क्या है सोचिए आप। दिमाग खराब होता है, शरीर खराब नहीं होता, दिमाग, जब दिमाग खराब तो शरीर भी खराब। आदत नहीं है अंदर रहने की। कितने लोग अंदर रहते थे, थोड़ी देर घर में रहे, चलो ड्यूटी पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे कुछ इधर उधर का किया, काम धाम किया, नहीं किया, फिर वापस आ गए, फिर इधर उधर। 24 घंटे काटने आसान नहीं होते एक नॉर्मल आदमी के लिए जो बिजी नहीं है, ऑक्युपाइड नहीं है हर काम में। ड्यूटी तो ड्यूटी की जगह 8 घंटे 10 घंटे करके आ गए, 2-3 घंटे ट्रैवल में लग गए और 4-5-6-7 घंटे सोने में लग गए, तो चल जाता था, चलो कोई बात नहीं। अब हो गया, नींद कितनी आएगी? नहीं आएगी ज़्यादा। अब ये खाली है। कहते हैं एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। इसको रखना है, इसको काम दीजिए। काम देने वाले आप हैं क्योंकि आपकी वेसल है। ये काम ढूंढना आपको पड़ेगा, नहीं तो गंद आएगी दिमाग में। आ रही है, मैं देख रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन मैं रोक नहीं सकता उनको। जितने भी गंद आज आ रही है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसे भी लोग हैं। हम तो सोचते थे शायद वेस्ट वाले ही खराब हैं, नहीं। मुझे वहाँ से फीडबैक ऐसा नहीं आ रहा। मुझे तुर्की का भी आदमी फ़ोन करता है, अरब का भी आदमी फ़ोन करता है, उधर मिडिल ईस्ट फ़ोन आते हैं, बाई चांस आ जाते हैं, जो मेंबर्स ले लेते हैं, हम एक दूसरे बन जाते हैं। एक्सप्रेशन नहीं होता उनका अच्छा, लेकिन मैसेज तो क्लियर होता है। का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सारी दुनिया आज की तारीख में आइडल हो गई। और ये भी एक खतरा है, ज़्यादा आइडल रहना। कब तक आप दिमाग खाली रखेंगे? अगर सही काम नहीं मिलेगा तो गलत काम करेंगे। दिमाग को तो कुछ चाहिए, जिस तरह पेट को चाहिए। चलो पेट की तो रोटी आपको खाली, तो दिमाग को कहीं ना कहीं जो 8 घंटे 10 घंटे आप काम में लगाते थे वो तो पूरा करना पड़ेगा। और उसके लिए आप ढंग से कुछ ढूंढ लीजिए। मैं तो ये सलाह दूंगा, कुछ भी ढूंढ लीजिए काम करने के लिए।
अपनी किताब नहीं पढ़ने की आदत है, कोई बात नहीं, अच्छे वीडियो देखिए, कुछ सीख जाएंगे आप। पुराने वीडियो बहुत पड़े हैं इंटरनेट पे, जब भी टाइम होता है मैं भी देखता रहता हूँ, बहुत पुराने, कब क्या हुआ वो देख सकते हैं आप। कुछ दूसरा काम कर सकते हैं आप, अपने वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी नहीं तो अगर आपके पास सोर्सेस हैं आप लोगों से बात कर सकते हैं, शुरू कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चाहिए, कुछ बैक होनी चाहिए आपकी, तभी तो बात करेंगे। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कुछ और काम कीजिए। इस समय में मैंने जब भी खाली ज़िंदगी में टाइम पाया है, मेरी कोशिश ये रही है कि भगवान ने मुझे खाली समय इसीलिए दिया है कि आने वाले समय में आपको कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाइए। मैं ये समझता हूँ, ऐसे फेज़ मेरी लाइफ में आए हैं। जब भी आप जॉब चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ टाइम आपको खाली रहना पड़ता है। उस टाइम में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए आगे आने की इच्छा, और आप करते भी हैं। कई लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग करते भी, और वो फिर मैं देखा है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में वो जम जाता है, वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। आई एक्सपीरियंस दिस पर्सनली। इफ आई हैव सम टाइम आई स्पेंड दैट ऑन थिंकिंग एंड वर्किंग ऑन लर्निंग, that material becomes useful in future when you are somewhere else. I'm not saying it happens, and that is what we have to do. I understand everybody cannot do that, but it is self-management. It's your own management, how you manage your time. Remember, once time is lost, it's not your property. This is very big point. If you lose your time, you cannot count as your property, and if you learn something, that is your asset. Self-learning, self-occupation, self-business, very important for you in whatever way you should use it. This is not a teaching, this is not a preaching, this is experience sharing. Extra activities I did like this myself, other than my profession. And it's not because I want to earn of that. I mean, it's not for money. It's for your personal happiness. It's for personal happiness. If you want that, if you want to talk to yourself, you can talk to yourself or you don't know. Talking to yourself, अपने आप से बात करना, अपने आप पे हंसना, अपने को क्रिटिसाइज करना, ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक, बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक वर्ड इज। मुझे अच्छा लगता है। एक थे हमारे साहब इंजीनियर कंसल्टेंट की, हमारी कंपनी के साथ हम सबमिशन भेजते थे, उनको चेक कर लिए, फिर वो मुझसे पूछने आने लग गए बजाय, हालांकि वो डिज़ाइनर थे, कंसल्टेंट थे, हम नहीं थे, हम कॉन्ट्रैक्टर थे। तो मेरी सबमिशन के बाद आने लग गए पूछने, मैं कोऑर्डिनेशन में था, यार ये बिल्कुल समझ नहीं आया, आप जरा बता देंगे मुझे, मेरा उस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आगे जरा बताना। अंग्रेज जिनको हम सैल्यूट मारते हैं वो, तो प्लीज़ टेल मी कैसा। मैं देखता था वो एलिमेंट्री चीज़ें नहीं जानते थे, यार आपने इसमें ये नहीं लिया, ये रह गया आपका। ओह सुराज, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, रियली आई एम बास्टर्ड, रियली आई एम बास्टर्ड दैट ब्रिटिश गाय सेज दिस। अपने आप को बास्टर्ड कह रहा है, आप पता समझते हैं बास्टर्ड का, उनके लिए वो मतलब नहीं जो हम समझते हैं, हम तो हरामी समझते हैं, वो हरामी नहीं समझते, वो कुछ और समझते हैं, वो कुछ और मतलब है उनका, लेकिन वो अपने को कह रहे हैं। मुझे हंसी भी आई, अच्छा भी लगा, चलो कम से कम ईमानदार तो है ना, कह तो दिया, छुपाया तो नहीं कि मैं इतना नहीं समझ पाया और आपने 1 सेकंड में बता दिया मुझे। उसका कहने का मतलब था मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ उस अप्रोच में कि मैं इस बात को समझ लेता, जबकि सारा दिन में यही करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देना है, अपने आप को, किसी और को नहीं। अपनी ही मेहनत से यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर योर डेवलपमेंट, योर ऑन, यू हैव टू कंट्रीब्यूट योरसेल्फ फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल समवेयर एल्स। It comes to you by book reading, it comes to you by research, it comes to you by from some information available on internet. Whatever you can do, no problem. Nobody stops you. और ये काम उसी के लिए, छोटे बच्चे तो नहीं समझते, उनको गेम खेलना है, कुछ करना है, उनको समझाना नहीं। मैं बहुत आते हैं यहाँ पर बच्चे या दूसरे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ एक मंदिर है, वहाँ आते रहते हैं लोग, तो भाई
पूछता रहता हूँ, मेरे को आदत है बीच में बच्चों से बात करने की या दूसरों से जो पढ़े लिखे उनसे बात करने की। तो कुछ तो खुंदक खा जाते हैं, क्यों पूछते हैं अंकल मुझसे आके, कुछ हंसते हैं, कुछ बात भी कर लेते हैं। तो वो सब मैंने देखा है भागते हैं जब कोई आप एजुकेशन की बात करें, सब भाग जाते हैं। एमफिल एक थी, एमफिल टीचर भी है यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा मैंने कुछ राइटिंग है, जरा आप देखेंगे इनकी, जरा मुझको कमेंट्स दीजिए, अपने ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहा था उससे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ ये करने आती हूँ, मुझसे पढ़ाई की बात मत करो। यार एमफिल हो आप, टीचर को पढ़ाती हो इस यूनिवर्सिटी में, आपसे पढ़ाई की बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, किससे करूँगा मैं? इतना भी आपके अंदर वो नहीं है। या तो आप एमफिल नहीं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप एमफिल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, एमफिल हुए ना, एमफिल या एमई जो भी हैं, आप एमए हैं, तो आपको इतना भी नहीं है कि मैं इतना सा कर सकूं, एक डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकूं। अवॉइड करके भाग गए। एमए इंग्लिश मिलते हैं, उनसे कोई बात करो, नहीं वो ऐसा है ना, बहुत दिन हो गए और ये जो टीचर पढ़ाता था वही पढ़ते थे, ये टीचर ने बताया नहीं मुझे, वहाँ टीचर को ब्लेम करेंगे। पढ़ा आपने नहीं, सीखा आपने नहीं, यू आर ब्लेमिंग योर टीचर। टीचर ने आपको मना किया था, मत पढ़ना आ गया। एमए इंग्लिश मेरे हिसाब से कोई छोटी डिग्री तो नहीं है। एमए इंग्लिश का मतलब होता है आप एक टीचर बन सकते हैं इंग्लिश के, स्पेशलिस्ट हैं आप इंग्लिश के। अगर आप ट्रांसलेशन भी सही नहीं कर सकते, कैसे पढ़ के आए आप? नहीं, जो लिटरेचर पढ़ा है हमने, अरे लिटरेचर ही सही पढ़ा तो है, लिटरेचर में टीएससी कैट तो नहीं होता होगा, सीईटी कैट ही होता होगा ना, क्या पढ़ाया आपने? मेरा कहने का मतलब ये है, आज की तारीख में कोई यही भी कहे ना कि पढ़ा लिखा हूँ इतना, मुझे यकीन नहीं होता। जैसे मैंने कल की आपको बात बताई इसकी, कि ये रेड क्रॉस की जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो भी एमबीए है। मुझे गुस्सा बहुत आया जब मैंने उसको बताया, चला पता, फिर वो अवॉइड करने लगे उसको। तो बताओ ना, नहीं नहीं वो उसने कहा है टेलीफोन कर लो। ये सामने वेबसाइट आपके है, सबूत मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताइए कहाँ जो आप कह रहे हैं उसमें लिखा है। मतलब कुछ भी बोल दो। अगर हमारे देश के पोस्ट ग्रेजुएट भी ऐसे ही फेंकेंगे, एमबीए लेवल के, एमए लेवल के, एमफिल लेवल के, तो फिर क्या रह गया? पढ़ाई होना ना होना बराबर है। आप ना किसान बन सके, ना आप जवान बन सके, ना आप अध्यापक बन सके, आप हैं क्या? मेहनत का काम आप नहीं कर सकते। आपको ऑफिस में बैठ के टीचर बनना है, क्लास में बैठ के, वो भी आप नहीं सही हैं। स्टूडेंट को आप सही नहीं पढ़ा सकते। स्टूडेंट नकल मार के पास होते हैं, रट के पास होते हैं, या कहते हैं हमने 10 साल के पेपर पढ़ लिए, उसी में से आ गए, हम पास हो गए। तो भैया ये तो अपने आप को धोखा देना हुआ ना। यू आर चीटिंग योरसेल्फ, यू आर चीटिंग मी, यू आर चीटिंग सोसाइटी, यू आर चीटिंग नेशन। Why do you want to cheat nation and world? अगर सीखना है तो पूरा सीखो, सच सीखो। झूठ में पास हो गए, क्या करेंगे आप उसका? अगर आपने झूठ पास किया, चीटिंग करके पास किया, तो आपको क्या मिला? आप ये भी तो सोचिए ना, खाली सर्टिफिकेट है, बस जॉब मिल जाए आपको, एक ही मंजिल है आपकी। आप सीखिए तो सीख के आइए, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू है। काम आपने ही करना है, नॉलेज आपको होनी चाहिए, ज्ञान आपके लिए है, सर्टिफिकेट के लिए नहीं है। सर्टिफिकेटों की स्टेटमेंट है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अनाउंसमेंट है पब्लिक को कि ये आदमी ये पड़ा हुआ है। लेकिन काम तो आपने करना है। फिर आप इधर से झूठ बोलेंगे, उधर से झूठ देंगे, झूठ पढ़ा देंगे बच्चों को, और बच्चे झूठ सीख जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा? इसका मतलब आप सिर्फ इजी गोइंग लाइफ चाहते हैं, आप ना सीखना चाहते हैं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे भी नहीं। हमारे यहाँ एक और चलन रहा है शुरू से, बस जब तक टीचर नहीं बताएगा हम आगे नहीं चलेंगे। हम नहीं चल सकते आगे। टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है आप। किस लिए? टीचर आपको गाइड दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, आपके साथ आपका हाथ पकड़ के लेके नहीं जाएगा वो। उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं बता सकता आपको। लेकिन उससे आपने मना किया कि आप खुद ना पढ़ें। आप अपने को ब्लॉक क्यों कर देते हैं? आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? वो टीचर ने कहा पढ़िए। आप स्टोरी राइटिंग क्यों करते हैं? आप बाकी चीज़ें क्यों पढ़ते हैं? वो तो नहीं किसी ने कहा आपको पढ़िए, क्योंकि आपको अच्छा लगता है।
आप ताश क्यों खेलते हैं? किसने कहा आपको खेलिए? लेकिन आपको अच्छा लगता है, मतलब ये जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करेंगे आप, बाकी नहीं करेंगे। लेकिन जॉब में तो रोज एक ही काम करते हैं आप। जॉब तो अच्छा लगेगा आपको क्योंकि नोट मिलते हैं, वैसे जॉब भी अच्छा नहीं लगता, सच तो यही है। नोट मिलते हैं इसलिए करते हैं, अपनी जॉब में मज़ा नहीं आता आपको, लेकिन जॉब में भी मज़ा आना चाहिए। वो जॉब ही क्या जो रुला दे, वो जॉब ही क्या जो मेरी हंसी ख़त्म कर दे। हंसी नहीं भी आती तो हंसी निकालिए उसमें से। जिंदगी जीना पड़ता है ऐसे ही। अगर आप सड़ सड़ के जिएंगे तो सड़ सड़ के जिएंगे, और आप खुशी से जिएंगे तो खुशी से जिएंगे। मैं उस काम को काम नहीं समझता जिसमें आप बोर हो जाएं। बोरियत भी एक हैप्पीनेस लाती है, क्योंकि काम से काम निकलता है, काम से ज्ञान निकलता है, और ज्ञान से काम करते हैं। ये थोड़ी सी बात है, लेकिन हम लोग नहीं समझते। और मैं हमारा ही नहीं कह रहा, सारी दुनिया का ये हाल है। खाली मैं हमने हमारे लोग को नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में हाल है। हर आदमी चाहता है यार ऐसे मिल जाए। शायद ये नेचर है, कल्चर डिफरेंस है। जो आदमी व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट हो अगर थॉरो स्टडी करता है, मेरे हिसाब से वो बेटर है। बेशक मार्क्स लाए उसके 90% मार्क्स नहीं चाहिए, आपकी नॉलेज चाहिए। 90% मार्क्स आ गए, घमंड आ गया, मैं तो इतना कर गया, वो घमंड उतरेगा नहीं कभी आपका, कभी नहीं उतरेगा। लेकिन आप में घमंड आते ही आप गिर जाएंगे, याद रख लेना। और आपने अगर थॉरो स्टडी की होगी कभी घमंड नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपने थॉरो स्टडी की है। बेशक मार्क्स आपके कम आए हों, स्टडी आपने थोड़ी की है, तो आप सॉल्यूशन देंगे। पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है? सॉल्यूशन देना हर प्रॉब्लम का, जिस भी फील्ड में आप हो। इफ यू कैनॉट गिव सॉल्यूशन टू पब्लिक, योर स्टडी इज यूजलेस, जस्ट ए टैग फॉर नथिंग। पुराने थे, मैंने देखा लोगों को, ज़्यादा डिग्री नहीं थी लेकिन काम आता था। हम 11वीं क्लास में थे, 10वीं में थे, 10th 11th में एप्लीकेशन लिखने नहीं आती थी तो जाते थे किसी के पास, वो मैट्रिकुलेट भी नहीं था। हम चाचा कहते थे ये ज़रा लिख देना बाबूजी, मेरे को एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंसिपल लिखने नहीं आती, पिताजी से साइन करा दूँगा। ऐसे करते थे क्योंकि उनके अंदर प्रैक्टिस की थी, उन लोगों ने नॉलेज थी उनको। ज़्यादा बड़ी डिग्री नहीं थी लेकिन लिख देते थे और अच्छी राइटिंग में लिखते थे। बस पिताजी ने साइन किया और हमने जाके अपने टीचर या अपने प्रिंसिपल को दे दी। तो नॉलेज बढ़िया है कि वो डिग्रियाँ बढ़िया जो कुछ नहीं कर सकती। आज भी मैंने देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एप्लीकेशन लिखने नहीं आती, फॉर्म भरना नहीं आता, मतलब समझना नहीं आता, तो क्या फ़ायदा यार आपकी स्टडी का? सबको मैं नहीं कर रहा, फिर बता, कुछ लोग ऐसे हैं, टीचर हों, प्रोफेसर हों, पीएचडी हो, हर सेक्शन में लोग ऐसे हैं। मतलब ये कि स्टडी नहीं की, डिग्री ले ली, और आजकल तो डिग्रियाँ बिकती भी हैं, ऑनलाइन बिकती हैं, उन्होंने भी ले ली होगी भाई, क्या कह सकता हूँ मैं। लेकिन जो नॉलेज रखेगा वो डिग्री की चिंता नहीं करेगा, वो काम करेगा। ये भी एक सिस्टम है जो ख़राब हो गया, इसको मैनेज करना पड़ेगा। एजुकेशन पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, हम सब जानते हैं, एक खाली कहने की बातें हैं। एजुकेशन जो पैसे से खरीदी जा सकती, एजुकेशन नहीं हो सकती, वो काम नहीं हो सकता, वो खरीद ले किसी को। ये सब चाहिए आज की तारीख में चेंज करना, सब कुछ चेंज करना है दुनिया में। जो गंद फैल गई, अब छोड़ो, यहाँ नहीं, यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में फैल गई, यहाँ की क्या हो रहा है, वहाँ भी थीसिस बिकते हैं, बनवा लो मार्केट में पैसे देके। इंग्लैंड कंट्री जो एजुकेशन अच्छी मानी जाती थी एक टाइम में कि बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज काफ़ी है, वो भी गिर गया। मतलब ये कि हर तरफ गंद फैल रही है, हर तरफ गंद फैल रही है। अमेरिका तो पहले से ही गंद है, हम गंद हो गए, अब पहले भी हम गंद थे। जब सारा कैरेक्टर, चरित्र गिर जाता है तो हर जगह से गिरता है, और आज वही हाल है। शक्ति में भी हमारा चरित्र नहीं है, पढ़ाई में भी चरित्र नहीं है, ईमानदारी में भी चरित्र नहीं है, कैरेक्टर में नहीं, कहीं नहीं है, और इसलिए कोई संतुष्ट भी नहीं है, कहीं संतुष्टि नहीं है, कहीं कॉन्टेंटमेंट नहीं है कि ठीक है यार ज़िंदगी जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। सब लूट मार, जिसको देखो, धर्म वाले हों, अधर्म वाले हों, बिजनेस वाले हों, पॉलिटिक्स वाले हों, सब की एक ही है, गंद।
ये गंध हमको दिख रही है, फिर भी उसको हटाते नहीं है। एवरीबडी लुक्स एट दैट डर्ट, दैट स्लज, इवन देन नोबडी ट्राइज टू रिमूव दैट फ्रॉम दैट स्टॉक, स्टिल इट्स ऑगमेंटिंग। प्लास्टिक देख लीजिए आप, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, पर कुछ भी नहीं कर रहे हम ड्रामेबाजी के अलावा। जगह जगह पड़ा है, इधर से उधर उड़ जाता है, उधर से उधर उड़ जाता है, पूरी दुनिया का यह हाल है, फिर भी कुछ नहीं। बस ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसका कोई रिजल्ट कहीं से नहीं आ रहा, और इसीलिए कोरोना आ रहा है। सही बात तो ये है, हम खुद खराब करते हैं। अरे प्लास्टिक का बैग आपने यूज़ करो, कई बार यूज़ करो उसको, एक बार क्यों करते हो? प्लास्टिक है, हम जानते हैं उसका कोई रास्ता नहीं है। आप एक बार सामान यूज़ किया फेंक दो। अरे भाई रख लो उसको घर में, लटका लो किसी कील लगा के, रखे रहने दो 10-5 प्लास्टिक के बैग उस पर, बार बार कहाँ भाग जाएंगे वो। यूज़ करो, फिर सामान उसी में ला के फिर रख दो। नहीं, फेंक दो। फेंक के कहीं जाएगा नहीं, वहीं आएगा आपके हवा में उड़ के, फिर वहीं आएगा आपके कोर्ट यार्ड में, फिर आपके मकान में गिरेगा आके, फिर उसे उठा के बाहर फेंकना, फिर गिरेगा आके। कब तक चलेगा? बढ़ता जाएगा गंद। आप और बैग ला देंगे, हालांकि बैन कर देते हैं, फिर भी मिल रहे हैं बैग, लेकिन हम नहीं सोच सकते। कूड़ा है फेंको, कूड़ा है फेंको। अगर उसको 4-5 बार यूज़ कर लें, 5-6 बार यूज़ कर लें, तो कम तो होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको सोचना तो पड़ेगा। नहीं सोचते, कम नहीं सोचेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर पैदल चल के सामान ला सकते हैं, आपको गाड़ी जरूर ले जानी है, मत ले जाइए, पर लेके जाएंगे आप। सब्जी लेने जा रहा हूँ, अरे 200 मीटर पे दुकान है, आप ऐसे ही जाके ले लीजिए। नहीं, टाइम नहीं। आप जाएंगे, कार खड़ी करेंगे, और 4 आदमी भी आके कार खड़ी करेंगे, सड़क जाम कर देंगे। आप अगर 15 मिनट चल लेते जाने में, 15 मिनट चल लेते आने में, तो क्या चला जाता आपका? नहीं सोचेंगे। अपने बच्चे को भी साथ ले जाओ, एक बैग वो भी उठा लाएगा। नहीं, वो बहुत बिजी है, पढ़ाई कर रहा है, घर का काम कर रहा है। ठीक, ये अप्रोच बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम ही आएंगी। आपको लाइफ मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ये भी एक लाइफ का प्रोजेक्ट ही होता है। अप्लाई दिस अमेंडमेंट ऑन टू योर सेल्फ। आप अच्छी फैसिलिटी चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्दी होनी चाहिए, अनहेल्दी नहीं। मजदूर रहता है झोपड़ी में, मैंने देखा, सब रहते हैं, गंद है वहाँ पे, उसके हाथ में नहीं है, गंद तो आएगी, हवा से उड़ के आएगी, लेकिन फिर भी वो साफ़ करता है, बाल्टी से पानी भर के लाता है। उसके बच्चे लाते हैं, क्योंकि जीना उसको है। छोटे छोटे बच्चे ला रहे हैं, छोटी छोटी बाल्टियों में पानी, उससे पानी, उनकी एक्सरसाइज हो गई। धूप में भी पड़े हैं, कपड़े भी नहीं ज़्यादा पहने हुए, धूप पड़ रही है शरीर पे, मरे नहीं, जी रहे हैं। तो लाइफ में कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल कर रहा है वो, आपका बच्चा नहीं कर रहा। जाता है तो कहाँ जाता है? जिम में जाता है। जिम आपके लिए गलत बना है। आपकी बॉडी जिम नहीं सह सकती, या तो इतनी स्पीड से आप करेंगे, वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं होता बताने के लिए कितना स्पीड से करना चाहिए। जिम पे आप डिपेंड हो गए। कई हुए मरे हैं जिम से, लोग जिम से मर गए कई लोग, फिर भी जाते हैं। ठंडा भी पीते हैं वहाँ, पेप्सी कोका पीते हैं वहाँ, और जिम भी करते हैं वहाँ। तो कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा? आप सड़क पे नहीं चलेंगे, आप गांव में अपने नहीं चलेंगे, आप अपनी गली में नहीं चलेंगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं चलेंगे। आपका बच्चा नहीं चलेगा स्कूल जाने के, स्कूल बहुत दूर है, माना बच्चा साइकिल पे नहीं जा सकता, नहीं, स्टेटस की बात है, हम नहीं जाने देंगे। ये अब आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि कोरोना है, अपनी हेल्थ के लिए, हवा पानी के लिए। हवा बहुत गंदी हो चुकी, आगे गंदी नहीं हो सकती। मौसम चेंज हो गया, आंधी आती है जब नहीं आनी चाहिए उस मौसम में, बारिश होती है, मौसम बारिश का नहीं है तब भी होती है, इसलिए कि सबकी कंपोजिशन चेंज हो गई। और कंपोजिशन चेंज, हवा की चेंज हो गई, पानी की चेंज हो गई,
आज भी लोग गंदा पानी पीने वाले हैं, सब आरओ का तो नहीं पीते, बहुत से लोग हैं जो सीधा पानी पीते हैं। क्या करेंगे वो, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन पीते, हजम भी हो जाता है उनको। आरओ तो अभी आए हैं, हमने भी 40-45 साल वही पानी पिया था, पीना पड़ता था, क्या करते। मेरा कहने का मतलब ये है, सब कुछ बदलता है, चेंज इज ए मस्ट, लाइफ चेंज का ही नाम होती है। हम कहते हैं इंजीनियरिंग में चेंज फॉर चेंज, हर रोज़ हर चीज़ चेंज होती है, ये नेचुरल प्रिंसिपल है। मटेरियल चेंज होता है, मेटल चेंज होता है, रेडियो एक्टिविटी चेंज होता है, चेंज होता रहता है, शरीर चेंज होता है, माइंड चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, टाइम चेंज होता है। वो तो होगा, हमको सिर्फ अडॉप्ट करना है सही काम के लिए, वो करना जरूरी है, नहीं करते, भागते हैं उससे। बस इतना सा करना है, दूसरे की हेल्प करने के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए। ऊपर वाला पागल नहीं था, जो नेचर बनाया, एक बैलेंस रख के लगाया, उसने कहा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जमीन पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ सोचा होगा उससे, तभी तो सब कुछ दिया, सब कुछ जो भी यहाँ रहता है, वन हु इज मेंबर ऑफ दिस अर्थ, इट्स फॉर दैट पर्सन, दैट सोल, और किसी के लिए नहीं दिया उसने। लेकिन हम उसके ऑनर बन बैठ गए, हम जो चाहेंगे वो होगा। खैर कोई बात नहीं, आप चाहते रहिए, मेरे भोंकने से तो कुछ नहीं हो जाएगा जो बोले जा रहा हूँ मैं। मेरी आत्मा कहती है, मेरा मन कहता है, मेरा माइंड कहता है, मैं बोल देता हूँ, क्योंकि पढ़ के तो कहीं से नहीं आया, किताब में भी नहीं है कहीं, बस देखा, समझा, बोला। इसमें सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच, थोड़ी सी थ्योरेटिकल अप्रोच, ए मिक्स अप ऑफ बोथ, और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, बाकी इंटरप्रिटेशन मेरी कुछ, आपकी कुछ, कोई बात नहीं है। नहीं अच्छा लगता, लगता है कि बात है। क्वालिटी की मैं बात ज़्यादा कर रहा हूँ आजकल, यू मस्ट नो दैट। क्वालिटी एक शब्द हमने दिया है, कुछ नहीं, वो कैरेक्टर ही है। किसी चीज़ में हम क्या कैरेक्टर डालें, क्या चरित्र डालें, उसका कंडक्ट कैसा हो, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी, क्वांटिटी, चेंज, टाइम, वैल्यू, कॉस्टिंग, ऑल दैट, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। उसको मैनेजमेंट कह दें, आप कुछ भी कह दें, हर चीज़ मैनेज होती है, टाइम भी मैनेज होता है, कॉस्ट भी मैनेज, क्वालिटी मैनेज होती है, एवरीथिंग इज मैनेजेबल एंड यू हैव टू मैनेज इट। मैनेज मीन्स proportion of time, proportion of cost. If you don't value time, you can't manage. If you have to do work in 1 minute, if you take 1 hour, means it's not management. You have to take time management, cost. Time management relates to cost management, and cost management relates to quality management, and everything related to other systems. This is what we are serious about. आपके पास जिंदगी में टाइम निकल गया, क्या करेंगे? कहते हैं मेरी स्टडी खराब हो गई, मेरा 1 महीना खराब हो गया तो हो गया। आप सो रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया था, गॉन, इट्स गॉन, इट डजंट कम बैक इन योर लाइफ, इट हैज गॉन, अदरवाइज नो, टाइम नेवर मूव्स ऑन, दिस डजंट गो, बट इन रिलेशन टू माई लाइफ आई हैव लॉस्ट इट, आई लॉस्ट टाइम, आई रिपेंट, oh I had lost time. No way, you repent or don't repent, it won't come back. It was yours, you don't care for, it's gone. It was your time, you lost it. That's why I am suggesting this is time you use it. Best use is learn something, anything. And that's why I am trying to help you to learn. Though I am talking about management, but every life part is management. Time management. You use time for your benefit. Don't waste it. You will get something, not in form of money, but in form of augmentation of knowledge, or some other form. So I was interested in project management. I am still interested, because I have seen in my life everything is moving, but specific managements are not moving correctly, particularly in our country. Particularly, I am not saying everywhere it is,
In some countries it's even worse than we have in some countries, but that is very rare. It's moving very nice in some countries and it's moving very bad in some countries, and we are one of those. We are not managing, actually we are not managing anything. In fact, in our country we are not managing any area rightly, with exception of something which are ignorable. Otherwise, we are not able to manage anything anywhere. It may be society, it may be non-society, it may be government, it may be private sector. Wherever you go, you will find mismanagement. And that is not because of everybody, it's because of lack of system. Systems have broken themselves because they are not effective, or these are not modified. If there is modification, it can work. You may say, if it's old system, it has completed, become worthless sometimes, and somewhere it's working very, 20%, 30%, and people don't take attention of that. That's what I'm saying, because I am from construction field, from civil engineering. So I think that way. I think that is a good contribution to society. I am not saying that's exclusive one. Medical is also equally important. We have seen now what standard we have, what quality we have. Now it is very witnessed and clearly seen. There's no need of any reference. All people know where we stand. Means we are not well structured in medical services. It's very clear now. We have left this responsibility to private sector, which is not, you can say, appreciable. It's not public service, it is service for rich. They are making money out of that. It is service for those who are having insurance companies, they are making money out of that. Public is not availing anything there. There are many countries who are getting these private medical services temporarily nationalized so that everybody can benefit. I was happy to see one news yesterday from Saudi Arabia. They say we will provide free services to all residents and citizens of this country who are now here. It's great. If government takes responsibility, state takes responsibility of people, it's nice, means appreciable. Means they are worried, this means. If they are worried, fine. Whatever is good, you have to say it is good. We are not managing. Now projects are not working. We know all projects are closed. All industries are closed. So currently it's not going on. All projects here were going on are stopped. Everybody is run away. Where these projects were, they are there. Just nuisance, another nuisance. Some excavation is there, it says it is. Some water stagnation, it says it's. Nothing as means, I don't know for how many months it will go like this. It's public nuisance. Alright, no problem. But permanent, it's not permanent, it's temporary. We have to move further. We have to consider quality criteria, quantity criteria, and complete renovation of our lifestyle. In future, what is going to happen? We do not know today. But we can anticipate that completely there is a crumbling of society now at the moment everywhere. Jobs are out, industries are closed, industries are closed, life is closed. But it will rise again in different mode. Maybe you value something which you did not value before, and maybe you remove value from something you valued too much before. This shall happen. Something will be respected or so respected off, and that's right, it happens. It's a kind of change, you can say, in this time. This is a change time. We have to change, and actually it's right moment. We have to change, and particularly I would request all engineering fraternity now to start anew, because just like without farmers you cannot move, you cannot survive. Without engineers also, nation cannot move. I am not saying first essentially engineer, but development is because of engineers.
That's true. You cannot deny this fact. There are agricultural engineers also, don't forget that, who can change agricultural scenario. There are not very famous, but there are. But development lies in hands of agents of change who are engineers. And engineers mean not only qualified engineers. I am considering part of public also engineers. It's for them. They are using these services and they are availing this service and they are supporting these services. So management is a part of engineering, just like engineering is part of management. Engineering I understand in different mode, not as you think. Because there is a saying, engineer can become a manager successfully. But manager cannot become an engineer. That is also true. Because to become an engineer, you need education of engineering, training of engineering, not management. But to become a manager, not necessarily you start with training. You can become manager by experience. And there are managers. So there is a relation, cordial relation. Engineer is a manager as well, but manager is not an engineer as well. This is difference. But experience teaches so much. When you are qualified engineer, you have a responsibility towards society that you have to help society by strengthening infrastructure, by strengthening quality of projects. That is your job when you are in employment or you do something else. You are in practice. You should do that. That's your job. And if you do not do that, you miss so much. You even don't know what you miss. You miss a lot. I have talked to you about many issues related to quality, quantity, management. Means I said before also, this is a triangular management and there are so many supporting managements there. Cost, quality, time, basic criteria, quantity, related to cost and time, independent of everything, and quality means power of management. Quality-less management is absolutely weakest management. If your quality is missing, you cannot say this product is reliable product. We have to be careful about this. Just like I have a quality, maybe I cannot define that, my quality, you can define that, or I can define your quality. Because we all have something in everybody, something in someone and something else in someone else. That is called personality. This person has this quality, this of this nature, this person can do this, cannot do this. All this applies to everybody. That is what we have to think of. Definition of quality is very wide. I had many quality friends. They were quality friends, but they never explained what they were having. They failed to explain that. They said, I'm a quality guy. I have to do your inspection. Alright, inspection you do. But please tell me what is quality. They never understood. But they were from quality. I don't criticize them. No. It was not their mistake. It's a mistake of quality system. Because quality system itself is qualityless. Problem is that. You know what happens? When there was no formal quality system, quality was better actually. When there was no quality system, quality was better. And since this has started, quality has deteriorated, is down. Talk is more than walk. Simple. They talk, they don't walk. When you say, I am only quality thinker, I don't care for what you are doing, you will not add to quality knowledge. So you want to keep off work. You want to say, that's not my domain, it's your domain, you do it. I will just see what you are doing. And when you call me only, I won't be there dedicatedly. I won't be there present full time with you. I'll just come when you call me, request me and say, oh, you have done right, okay, you have done right. You are not done, I reject it. That is the case. You just tell me. If you do not see complete procedure, how work we start,
How we start that, how we finish that, if you don't know complete process, how shall you understand quality? Is that a point? If you're not seeing complete activity, can you understand quality? You cannot. When there was only one person doing everything, doing yourself, reviewing yourself, checking yourself, you knew complete process. But it fractioned later on into many pieces. So you know only one piece. Just like, hey, please, I am planner. Talk to me about planning. Don't talk to me how you are doing on site. That is your criteria, your business, your headache. I am a quantity surveyor. Please tell me about, I am ready, give me drawing. I will give you results. What is quantity? That's all. That's my business, nothing else. Everybody has taken part responsibility of that work, not full responsibility. And that is the problem actually. A man working on front line, he says, this is my job, just give me everything, I'll do it. Planner says, just give me, I'll do it for you, do it, then follow it. Just like designer and all others. They have their own domains and they do not come out of that. Because it looks them fine, okay, it's better for me. Why to go and help, why to do for nothing, it's not my job. My job is limited. Well, fine, you are a specialist of that, we don't mind. But tell me one thing. If you don't understand that, how this person is doing, how shall you come to know what's your job? How can a planner plan something if that person has not worked in life like that? I am a planner, I just give you a program, a scheme, a chart, a schedule, follow it. Okay, fine, you give, but you have to prepare it. Can you prepare it correct? That's my question to you before doing that. If you don't understand what I am going to do or what I want to do, how can you understand, how can you produce on paper? If you do not know what sort of procedure, or you yourself are very experienced, fine, then it's okay, you do it. But you are young. You maybe have 2-3 years experience, or may not be there, anything, and you have started planning. How can you plan something if you do not know that how to do that? How can you do that? You cannot. But you plan, a plan, and that plan is not implementable. Sequences are wrong. Timing is wrong. Duration is wrong. Human resources loading is wrong. Machines rolling is wrong, and you are claiming follow it. Because you did not consult person who would do it. That is required. If there are 2, 3, 4 minds together working, planner working, site working, designer working, quantity working, all this should be in chain, in loop, only then they can see what other is doing, what I have to consider, so that work is done correctly in time, but it doesn't happen. They interfere on each other for nothing. I am not saying one man has to do, no, this time it's not applicable. You have to meet together to reach your target, because target is one for all. Target is not different. If I had to finish this project, as site person, planning person also has to present same type of report that this has to finish there, and same way quantity person and all other persons, they have to achieve this target through their organization, through their domain, through their responsibility. That is what management is all about. But management is not that you take information from this and give to other one. This is what's happening. Youth people, young people think, I am big boss, I am manager, associate manager, assistant manager or whatever.
I have this stuff, give me this, and I'm not going to screen that or research on that, but just pack it and post it further. I have seen many people like that. Many people like that. And there's something wrong, then they start scolding us. Why you did that? Why you tell me this and that? This is not management. You are not post office. Just seal and send. That's not your job. If you are a manager, you are responsible alone. It's your duty to screen everything that comes to you, to understand that, and to make sure that it is according to requirement. If you cannot do that, you just throw it to someone else. First you are not clear, then other person is not clear. There is no meaning of that management. So you cannot simply depend upon what is submitted to you in package form. You have to work on this. And you can work only when you are experienced. You have knowledge. आपको पता नहीं, दूसरे के इंफॉर्मेशन पैटर्न को आगे हो गया। मेरी डेफिनेशन लोग यही बताते थे मैनेजमेंट की, यही मैनेजमेंट होता है, इससे लो इससे लो आगे फेंक दो बस। नहीं, ये नहीं चलेगा। ट्रेन का गार्ड होता है, देखता है सिग्नल हुआ कि नहीं हुआ, देखना पड़ता है, तब चलाते हैं गाड़ी, आगे झंडी तब देता है, आगे चलाता है ड्राइवर गाड़ी, देखना तो आपको भी पड़ेगा। Actually, name is management is wrong. Something else should be there. Okay, it's management, but you are not managing. Tell me which item is perfect in market these days. Whatever product you buy, you will not be very happy. You don't will be. You buy from whatever international company, you won't feel happy. You go to market, you ask some shopkeeper or some person who is dealing with that, can you explain to me this item you're selling to me, how it functions? What are its limitations? How can I use it? That person will not tell you anything. If he tells you something, it's just throwing information. I got this wrong. This means different word. They are not interested to tell you. You open it and see yourself, try, or go to website and see yourself. They are just dealers. So you go and you contact this company and ask them. It also happens. I know. You contact whatever company, there will be some response or no response first of all. And if there's someone, that person will not explain to anything. I bought some material, chemicals for some work, flooring work, epoxy I bought. I tried to ask that dealer, is it useful for something? Can you tell me its function? See, साहब हम तो बेचते हैं, हम तो ऑर्डर लेते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वेबसाइट पर पढ़ लीजिए। चलिए, उसने फ़ोन मिला दिया, कंसर्न आदमी मिला। I wanted to know some information. I got him. He could not answer me that. Company man, manufacturer's representative. I wanted to know something. First of all, that person could not understand because they never get such phones. They never get such inquiries. I think this may be a weakness for us. If people don't ask and these dealers don't demand that, they are only interested in selling and those manufacturers happy, material is sold and that is success. They are well organized people, they are well certified people, but they won't respond to you. This means you have no feedback. But if you talk to other companies in some other countries, you will get information. When I ask you, you are paid, I am buying your material, why not telling me what I have to do, how it works?
I have seen your data sheet on website. I am not getting information that I require. इसे साहब देखिए उसमें लिखा है जैसा है हम नहीं कुछ जानते इसको. This is what's happening. They are well organized companies, very big names they have, but they won't inform you what you have to do. They write anything. This is guaranteed, this is guaranteed, this is best in world, this is that and this is that. Self-appreciation, self-publicity, self-claim, but when it comes to practice, you don't get that. Same thing. You are getting still from market. So many claims on that. This abides by codes, this has this property, thermally treated and this and that and this and that. You ask them, they will not tell you anything. And this matter will not work accordingly. This means we have certain lack of information for customers. We can't explain to customer what is required and what we are giving. Because no one is asking. And if no one is asking, no one is telling. This means there is an element which is missing there. There is a technocrat who is missing there, who is not available there, who can raise questions. I cannot expect a common person to raise such questions. Only a qualified professional can question, and they sell their cement by saying engineer's choice is this cement. You might have seen that. Where is engineer there and where is choice? Nobody, just put this out. Engineer's choice, this cement. This cement does not allow you corrosion. Now tell me what is the relation between cement property and corrosion of steel. But they have decided to write like this and sell like that. That is what I am saying. Fake information, wrong information, false information. And people accept that. Because domain checker is not there, quality examiner is not there. Quality examiner is a must for every activity, but no, they don't have. Maybe in papers they have, in virtuality they are not there. That's why everything is stopping. And moreover, mismanagement after that, everywhere. Only transport communication, transport convenience is kept in mind. This material must reach to that location and my job is over. That's all. After that, this responsibility of that customer, how that comes with success. And this is what is happening everywhere. Least botherance after that. We used to write in our statements when I was working overseas. We used to write method statements, generally called procedures. And it was mandatory to write those statements and get them agreed by both parties, by all parties, that we will follow this. That we may call approval or whatever it means. That party who signs this in first way, in first time, we will do like this. Other party who supervises us, both agree on that. Okay, we will comply with. That's called method statement. So many times it happens you write some specific method or proprietary method you use on this project or something, some item. So strike say we will follow in this item manufacturer's instructions. In general, in many cases when you don't have your site produced item, you have imported item or you have proprietary item, whatever manufacturers recommends or instructs, you will do that. Manufacturer. Did you find on these some instructions? You just notice in your time. If you are working, you see instructions are available or not. And if those instructions are available, are those consistent and competent or not, reliable or not? You will not find that. Not find that.
I visited one site of some chemical battered concrete. It's lying somewhere near batching plant, and one junior with me said, it's lying here in open and is a dangerous for this may not be appropriate. He tried to note on it. And on the material is on a mention which temperature is good for this, for shelf life. This, how much for shelf life, what should be temperature for storage. On that tin, on the box or container, it's not written. Or you see, this is management here. It is duty of that manufacturer to tell user what is your restoring temperature range. But that was not it. So you have to go to data sheet. Maybe you don't find there. Then from there. Is it not a flaw? You must inform its use character, its use criteria before dispatching from your store. But no. Means once you buy material, it's not my responsibility, it's your responsibility. That is what manufacturer says. Manufacturer self-relieves of all responsibility. You call this management? We are buying material for something, for some work. Its life may be 20 years, 50 years, I don't know. Your material must work for that duration, but it does not work. Here is management accountable. And here is where quality question lies. Here is where your money is spent. And after all, there are chemicals, there are other materials and many things which add or delete environmental properties. These points must be kept in view, but are cordon completely ignored. That is where I am saying quality issue is very important. Quality means total quality, quality of management and quality of controls both. I talked about quality of management at length. I refer to ISO 9001-2015, which is better suited for construction. I talked about various procedures there, revised one, how we can work on our way. I am not saying I just written something for my job and shared with you. That is system. That is system as whole. But there is real system in system. In that system, there is actual system. There is system which checks everything, which examines by close inspection, by close management, and that is quality check, quality control. Not total quality, quality control, which means testing. That is real check, which manages itself and adds value to system. If quality check fails, your system fails. You may provide anything in system. If result is 0, system is 0. But that is not guaranteed. That must be guaranteed. So I was talking about quality, and I showed to you many sketches in that connection, how we have to do that. Examples are, you can say, structural anatomy, ढांचा in Hindi, foundation, columns, beams, you all know that. I explained to you. बुनियाद, फाउंडेशन, कॉलम्स जिसको आप पिलर कहते हैं, मैं पिलर खंबा कह लीजिए आप। बीम्स जो ऐसे होती हैं हॉरिजॉन्टल होती हैं, और साथ में जिसको हम लेंटर कहते हैं या स्लैब कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, उन सब में बड़ा कुछ होता है। Lot of that is covered in that. We have to do a lot of work on that. Detailed work, not lot of work, detailed lot work.
that I am interested to explain, though it may not be used by you, but knowledge you should have, which is very important. And before that, I will try to show some sketches which are much more important than that. Those sketches, before going further, I'll try to show you, and those are real sketches from some field, and I'll just going through them, and I'll just brief you what are those. This is here. I can go through application. Yeah, I say here applications. Those are very different sketches and very useful one for purpose of understanding. I'll show you some sketches here. Let us say so it's a very simple sketch actually. One is the let's see. This one is sketch here, and this is some trench excavation safety. It's related to safety, but about this excavation. Let us say I have put this somewhere else, but I'll just try to explain to you what in my mind is. This is only for a small excavation. Trench excavation safety. This is one of those sketches, and means it shows how we do on site, how we take protections on this. Ladder, etc., and trench. Just for your information, we'll talk about them later on. Now I'm just trying to show you sketch 1, sketch 10. Let's see another sketch. This is 10. This is prefabricated, precast, and this is a manhole cover. I'm showing different, let us say. Just purposes to inform you. Actually, I'll talk on checking. These are, certain manhole covers you might have seen. How these are done in a manner which you first cast and then put them on the manhole. Steel is shown, and how these are prepared is shown. How these are lifted is shown. What's that one? Okay, yeah, I'll show you the other one. Then sketch 11. This is that. Another view of that, but different one. Its size is different, and same one, but little different size. Not exactly what I showed you before. This was some heavy projection. I'll show you other one. Then let us see other one. Sketch 11. Sketch 11. Yeah, this is tank base grouting with construction chemicals, safety precautions. There's a tank with grouting below that. Grouting means fix the position between tank and foundation. But to fill that, safety precautions required. This is that idea. Then let's go to 12. I'll just take time on this today, and this I'm going to show you very big machine foundation, that is compressor tabletop. It's called. It's foundation for big compressor. And this is used in facilities, big projects. This is that, You can see this very big foundation written here.
block, this massive block, very big foundation, and there are very thick columns here, and then there's a top, tabletop, on which compressor machine is fixed. And this is foundation of that, foundation of this tabletop, total. And then I will say 13. This is, and let's get this sea water basin, very important one. This is a sea water basin, big tank for storage of water from sea, and this is placed, located on some plants for purpose of cooling machines, cooling equipments of plant. This is complete technical RCC, and we'll explain it later on. I'm just trying to show you contents of future talks. We'll talk about that. But before going to quality checks, I just want to show how people work in field, what sort of structures we deal with. That is where importance lies. You can see this section, different levels. And this is waterproofing project building. Let us say some sketch here as one. You may not get completely, but I'm just trying to show you how we deal with that again. This is sketch 14. So I'll go further. This sketch 15. Various numbers not in sequence. The plaster block. This is another sketch, and this is regarding plaster block walls and tiles. Sketch is 15, let's go further. This is a kind of layout of the building, a normal sewer line. This is a very just indicative one. Is a building, how to connect the sewer line, how on. So how does she say 17? This is a box culvert. Let's say the sketch of this culvert. This box culvert closed from all bottom, top and sides, and how it works. Also 17, 18. It's diversion for rolling first. When they are working something on an existing road, you cannot excavate whole road for that pipeline or some electric cable. You have to do in sequences, and you have to divert traffic from the. So this is that one road is the. There are so many diversions to
temporary diversion form and to provide all traffic. So the solutions and then close it. And then this 18, 19, 6. This is a collection of water for waste purpose. This is water collection from whole area and it's going to outfall chamber, means final location of that one. And it's deep in excavation. Outfall chamber excavation. Section is like that, steps, and depth is say 1.5 meters, and width is that. This is 1.5 meter here, too much depth here is, other depth is here, total depth is 6.675 meters, say around 7 meters, total depth. Sketch 20, sketch 20, PDF, what is that? Let us see. Yeah, this is certain part of a sketch of that area, only one part of sketch. You may not directly take that, but just for this purpose. Go to next one, the sketch 20 is here. I go to 21. This is a pipe trench, and you can see there are other pipes in that. GRE, other pipes, and just fill in a section of a trench with the pipes in. GRE, there's a pipes here, plastic pipes, epoxy pipes here. Soil filled in, the sand pipe, sand surrounding pipes. 21, then there is 22. I'll show few sketches today, not all. Then there's cable in place of pipes. And we go to 23. This is duct, electrical cable ducts. The sleeves are here in that. Duct bank it is called, not bank of money, bank of ducts. Ducts means pipes in which cables shall move in. These are circular, means these are ducts, pipes, and in which cables move. So just in industrial projects this happens. Showing 24. This is ductment, another sketch of ductment, different types and different quantities. Sketch 24. I'll take sketch 25. Pipe culvert trench, means that is a box culvert. This is a pipe culvert.
Now go to sketch 26. This is foundation or base grouting on a plate of machine and foundation between two. So this is section here. This is system shown how to grout between plate and foundation. 627. Now this is a traffic diversion to lay a pipe below road. Traffic diversion. Here's the result. You see now. This is a new sewer line. Again, I'm telling you, as John shown before, but this is different design, little different than before I showed to you. Same for a building, a round building. 829. These all sketches were drawn long before, manually, and this is water reservoir, some steel details, and how can you construct a big water reservoir in different panels. We do it. It's that one. It's big dimension, big size. It is not small size. See the size of sizes. Let's see the size. Then it is 29. We go to 30. 3 says. This is excavation of a major building project. How to do the excavation of a major building? How to plan that excavation is planning excavation itself. This is a whole pit, whole area to be excavated, and how we provide access to that, how to go in. I'll go to another sketch 3. And there's some sequence differences here. Sketch 30. This is water reservoir sketch, as I said before. This is big dimensional sketch, not ordinary one. This section of that. We go to 30, 31, then this which one? Nothing. Oh, yes, sketches are gone. Sketch 30, 31, close again. Let's see. 30. This is now some manholes sketch, basically call them manholes.
certain structures, very, very small structures, but very useful, you know. Pipes come and meet in manhole. How to produce them by precasting. This is design details of that. Various manholes. And it is 32. This is also another sketch of same. Different manholes, different sizes. Also another one difference. I just a glimpse I'm showing is you will not the details of that, just the glimpse. Various sizes, various depths, and various connections. 34. Very small, different, various sizes, smaller one. Its top, front, section, all is shown. Not just one sketch, it's different sketches. And then it is 34, it is 35. Again same, it's 35. I have done some recorders of 35, it is different sizes. A bigger one and with many external additional details. You know, this is different types. And we go to 36, that's it. I don't repeat actually. 36. Yeah, this is a bigger one, very big one this is. Weir is there in between, the special design. There's a weir in between and you can see complicated details of this. It's all done in field, which you may not be aware of. It's all done for work. Without this, you cannot do work on site. This is 36. This is 37. This is a deeper one than that. Deep. See, steps are also shown in that. It is 37. Let's go to 38. Another deep, same, another deep one with many details. 38, 39, 39. I'll show you just a glimpse of that. Many manholes are here. 39, and then 40. What says? What 4 says first of all. 4 what says? Here is something different. It is an excavation in deep in clay soil. Excavation clay soil is a sketch 4. In sequence problem actually. This is trench, deep trench excavation with water taking out. You can see dewatering, pumping out water from below, from earth, ground end. This is these are 4 and 40. Yeah, this is another one. Many sketches are there actually. Many sketches of manholes are there. Other details, I'll not take much time on that. 40 and 41.
Maybe I missed some. Yeah, this is not say. This is RCC 14 shutters. This is that foundation shutters, simple foundation shutters, which is very important. This is a foundation to be built, and we have to provide shutters for that. Shutters with formwork, 2 plus concrete, and these are square footing. Yeah. I fill the concrete, we have to provide shutters on the round. So it is 2 meter, 2.5 meters, and RCC footing this is. So we have provided details how to work on site, what to tell carpenter how to fix it. 41, then 42. 42 is, yeah, this is another one, bigger size, same footing, shutter. So the same 41, let's see, 42. Sometimes which are repeated also, so I do not show them, but depth is more here, so I try to show you some dimensions, just means reference only, just some things are repeated, so I don't take much time on that. 41, then 42, 42 again it is same. This one is very common, so that maybe at this time I'm not sure what it was, just to show you. And 40, 40, 41, let's see, 42, 42, it's 41, let's go to 41 again, I don't know, 43, let's go to 43. 43, yeah, it's a wider one, its length is more than its width, 2 meter by 1 meter, and by 0.4 centimeters. This is a different rectangular. (43). Let's go further. 44. Yeah, this is also different size, reduced size, length, and with rectangular here. And this is, and all supports are shown how where support should come. I had to explain to worker. 44, 45. This is again wider one. You will not find such drawings are given here. Here nobody cares. That's why it's trying to say work should be done professionally, and this is what profession is. Every detail should be worked out. Don't leave it to tradespeople or artisans. We cannot leave it to them. We must tell it, do it. They may do it correctly, or maybe some variations there. This is a very big one, big footing, big foundation. You can see it's bigger one. Sketch 47. Let's go further. Sketch 47 and go to 48. Again, this is for 4 meter by 4 meters. You see the numbers of supports outside are changing in everyone. Everyone changing is, you have to see that 49, 49, let's say 49. Yeah, this is for a column, you see. The small rectangle in this column, small rectangle, and the supports on sides, and this is your column.
15. 5, let us take first of all 5. Yeah, this is again some access to range. I'll just show you and leave it. Different size and different one. I'll take the 15. Yeah, there's another column, same one but different size. Different size. I'll take then 51. 51. There's also different size again. 51, 52. Yeah, this is another one. Supports are shown, that bolts are shown, supports are shown. We go to 53. Here's another one, same but different size. 53. 54. 55. Yeah, this is major one. This is 55. Let's go to 56. My hands are tired now. 56. Yes, this is something different. I'm going to show you some layout of a big plant as I was talking of. And this is the one line layout. This is a plant, very small figure. It's completely 2 kilometers by 2 kilometer area. It's shown here. You can see that how it works. I'll show another one. This is 55, I think 55 to 60 is going forward. So it is 55. But it's not 55 to 60 so I take 50. I put this 7. Alright. 57. Come on. Yes, this is a little better than that. I'll show you a little clear one. But there's a landscape shown in that. It's a green color, it's all green area. On same plant, but smaller area of that plant. It does exactly whole one, small one of that. Let me take that one. You know, there's one administrative building here. There's some amenities building, some warehouses and surrounding areas. See, this is how it is done. Go further, 56, 57A.
57A. This is a line of the same one. Little less details, clear lines, no major details. So buildings are little clear in this than that one, and landscapes and all that. Okay, 57A. Let's see, 57B. Start. 57B. This is clear line layout. Go to the other one, 57B, then 57C. It's just the Greek in that. Certain portion is shown. This another building, not same one. This was a central control building of a plant, big building, very strong building, and there's a landscape of that. I'm just trying to tell you what is done actually. It's give some superficial information. I want to 57C and 57C. Now sketch 6. Let's see what it says. Sketch 6. This is safety plan of excavations. The sequence is different actually because of this listing. Is excavation safety. Actually this is sketch 6, but on that list is coming like that. What can I do? So now I'll go to other 6, then it is 50. After 6, that will be 50, 60 actually, it's going 60 now. I did not put right numbers, I think that's the problem. No problem. It's another tabletop, not before one. And the tabletop and the Publishe. Sketch 60. And somebody go to, so sketch 61. This is the building internal, a control building which I showed to you just now before, a big building. This is internally how it was. Various locations, how it was planned in various controls, computer area, other computer area. Then go 61, now go to next one. 61, then go to 61A. This is 61A. This is yes. This is of a support system for a cup lock system. This is I'm going to show you some slab support system for a typical property cup lock system. How we can shutter some slab, something like that. Problem is all temporary work. So 61A. I'm going to show you 61A and 61B. Says yes, this is formwork, RCC wall formwork system, side done. How to do wall or side, formwork of wall. This is the wall being planned. Plywood is shown, patterns are shown. Side done. And this is pour platform, jack supports, and we stand on that platform, can pour
concretes for that or various details are shown which are not shown in our country. These details are must for information to those people who work on the field. And this is 61B. We go to 62. That's what I say. 62. This is electrical substation building. Yes, this is a building indicating only. It's long one. It's just line plan of that. How you do that? You can see transformers are shown in small outside. Internal portion switch gear, and there's a voltage room. And it's just for that. This is sometimes long arc also there. And this is indicative. And we can say 63. This is another building. You can say another big building for residence purpose. It's kind of some offices, building offices, residence. This is a building plan only. This is 63. Let's go to 64. 64. This is another building, a kind very ordinary building for some offices. Layout only, line plan, not detailed one. Conference room is shown, for example, and then the conference room, and records room, and other offices. I'll show you 65. 61A. Which one was there before? I don't know actually. 64 or 65, I forgot number. Let me check it. 64. Yes, 64 was okay. So I should not make mistake. 64A. Yes, this is another sketch of lift formwork, elevator formwork, which we don't do here, but we do outside. The RCC lift, not they don't do block work or brick. It's lift. You see, 4 walls and door in between. It's called lift well, in which your lift car moves up vertically. And that's is details of how you should do woodwork for formwork, lift formwork. How support that in one story. This is door, inter one, and this is sketch 64A for lift. This we do everything for purpose to give details to people working there, and they must work accordingly. 64A. This is 65. Maybe you are feeling bored with these sketches. I will change after some time because I don't want to bore you. Just an indicative sketch for information only. You see this equipment inside, details of that. I'll go to 66, 66, 67. Another sketch of same time of seawater distribution process. It's another sketch at sea. This is detailed sketch for distribution of water to someone. I'll show you again and again when I explain. 67 and 68. There's so many sketches with me. It's also same one, but for drainage.
Now go to 68, 69, 69. I'll not take all the way. I think it's boring for you. And this is firefighting system in same one. And I'll go to 70 or 7. I think 7 should be there. 7 or 7 is, let's see. Yeah, these are foundations of pipe racks, easy one, not difficult one. Pipe racks foundations, on which there will be columns, and on those columns will be platforms, and on those platforms shall be, this is all for foundation of that. Foundation that system, carry pipes and platforms. Then 70 average. I average 70 now. And 70. Yeah, this is electrical external on the same building as C. Pump house building. So we go further. 71. This is for electricity facility distribution, for DBs, etc. How to distribute that. I'll go to 72. Potable water is same. Then 72, 73. Instrument here. See, various types of services are instrument here. Instrument here. This is then 74. This is oily water drainage, discharge from same one. And I stop somewhere. I'm also tired. 75. This is sanitary sewage, containment in that. Containment, not septic tanks, containment to store that. Then 76. This is also fire suppression and same. I just show you only, not explain anything. Fire suppression. And I'll take these sketches later on because there are so many more. I think there is up to 9 more. 74 it was, 75, right? 74 will come from 74 it was. Yes, it was 73 instrument, and 74, 75 was 75 was, yes, is sanitary sewage. So it was 76, 76 is fire suppression. I just show you, I repeated, no problem. 76, so I take to 77, 77, yes, it is 77. Yeah, this is something else. This is a kind of shooting range plan. No? It's long one. Long in science means, it's okay, this one okay. This is 330 meters long shooting range, and this is building where you sit here in this small one and shoot in this whole range. And there are three barriers in between, and this is a bullet where your strikes your bullet. This is that range. The only line sketch of that. And we go to another one. 77. I think 77 because I forgot number. 77. And
then 77A. 77A. This is further detail of that. Define details, foundations, with complete numbers, dimensions, and more explanations on that. I'm going to 77B. Few more sketches in this one. 77B. Further details of that same. Further details of that. So I'll move out. Maybe these are all same. 77B. 77B. Then 77B. SK8. What does it say? SK8. This is light pole foundation. You have seen light pole street lights. It's that foundation. There's a concrete block and pipe is there for this pipe is there for cable and all. And this is light pole foundation 8, sketch 8, and we go to sketch 80. Sketch 9 is this is sump chamber. It is sump means below ground to collect rainwater and dispose of them. Sump chamber or some other liquid from plant. This is collected and taken out. Then it is success 9, sketch 9. I'll show you something else here which is a little different. Just for information I'll show you now. I'll do it later. That is about some it is some book plans. Yes, this complex I'll show you, which is very important for information only. Later on we'll talk about that. And you can see that here. So this is an imaginary city complex. It's a big city, let us say. This is a PowerPoint of that. What I actually want to show is, actually it's not yet declared, but I'm showing something different. This is the same one. I'm showing something else about that one. Let's see here. This is conception.
for me. It's funny. Screen sketch here. Some sketch like this and some sketch like this. There are various parts of that building, that A buildings. I'll explain to you later on. I'm just trying to show you what is there in store for you. For example, this is written like this, Can you read it? It's written Bharat Mata in Hindi. These are all buildings. And then you can say, for example, something else here. I'll show you later on in full, but just for information, it's shown. And I'll go back and see what can I show you now. So this is a complete plan here. Many complexes in that. For example, this is all complexes with rows in. There should be about 50 or 45 complexes in. It's a big area. I'll tell you later on, not now, because it's can't be explained in one day. And I'll put this off now so that we can talk. Okay. My purpose to swing was different, I wanted to indicate to you what something of field we do. There's a lot of things we do in field, but these are some informations only that we deal with this. Purpose is information must reach to person who really actually does in field. If that information is reached, is fine. It should reach in time so that work is done according to that information. And if that is not reached in time, means we shall certainly miss something. Missing information can never give you right work. And for that, everybody has to work hard in field. It's not simple work as we do here. Leave it to someone and go away. You do this, I'm going. Just to explain one or two and go away. This is practice here. This is defect actually. This is where we fail. Every sector, you go to administration, you go to management, you go to government offices, you go to private offices, go wherever you want to go in our country, you will not find documents. You will not find documented information for work or for record. If you do it on work, we get work right. सही काम कराना है तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो काम अपने हिसाब से कर देगा. If documents are available in your offices, in your factories, wherever, we can refer to them, and for the old documents we can use them or learn from them. If old documents are based on facts, on right works, then anybody can go. You can go, someone new person can understand and can use them for new work also as a part of information, support or design. That is sole purpose of documents. And if you just consider documents as ragdi, kachra, throw it, shred it, you shredded your shred to quality. This is only difference of culture. We do not understand what we have to do. ऐ बोल दिया करो बस. हट धर्मी नहीं चलेगी. We can't believe in that.
And this is happening everywhere. No coordination, communication and links. टेलीफोन पे बोल दिया करो भाई, टेलीफोन इज नॉट डॉक्यूमेंट. You should give, of course you will take some time. You have to spend time if you want quality. You cannot blame worker, you did not do it right. First you blame yourself. Did you inform in time what that person had to do? That is the question one. And if you failed, why did you not do it? So this is your fault. Why do you blame that person? That's my question. How could Japan progress? Because they held seniors responsible, not juniors. If you ask a question to Japanese, who is responsible? They would say senior, senior and senior. Why is junior held responsible? That person is junior's name saying junior. You can't hold him responsible. Senior is not doing his duty. Senior is responsible. That is where responsibility lies. And senior most is further responsible. So here we share our responsibility. Oh, you are responsible, I am not responsible. Means we are weak people. We want to get money. We want to get everything. But we do not want to share responsibility. We give it to lower person. So we get lower quality. If you take ourselves, I look after that, I will produce to my knowledge. Maybe I give better quality. But work is required for that. You cannot leave it to a person who is not expert. And that's what's happening here. Everybody is leaving to everybody. This means we do not know procedures, we do not know sequences, we do not know methods, and we don't teach them. And because we do not know, we start our career, just start, run away and eat it. That's all. Learning and teaching are two different worlds. You may have 25 years experience, you have 50 years experience. If you learn nothing, you are zero, big zero. And if you may be 10 years experience, but if you learn, you are equal to 50 years or more. It depends upon your initiative. And that is where quality says. I want quality means you learn first, you be quality person, then you will work quality work and others will learn from your work. So you are a teacher in that way. And if you don't do yourself, you are not a teacher. That person cannot learn. This is what I am trying to say. We are short of documents. We are not interested in documents. And if somebody goes, gives you document, you say like this, why is bringing problem to me? Document is forever. You are not forever. Today you are here. After 1 year you will be somewhere else. But document will stay here. Or you may have soft copy of that as well. That document is wealth. What is book? It's a document. What is that saying? Knowledge. Giving a knowledge. So you can prepare document, approve it and keep in your place to refer and let others refer. That is sole purpose. If you make one sketch today, that sketch shall not disappear. It shall stay there. You can make another to need requirement based on that. Edit that one and make other one. And if that information reaches lowest person, who is a fitter, who is a welder, who is a carpenter, whoever plumber, who is he, you say to follow this. Follow this means that person shall follow this, provided that person suggests you something. If it's possible, you incorporate that suggestion so that your knowledge keeps on moving. Then you can ask that person, I gave you this detail, why did you not do this way? That person is not fool, will follow. What's the problem with that person? That person is not given information, that person does his way. If you provide that information, that person is that way. And that's where you improve quality. That's sole purpose. I try to explain
that we have to documents for temporary actions, for permanent actions, at least to tell them what is in our mind. Maybe your document is wrong. That person says, no, this is not possible, sir. You check it and make it possible. We call it in our language, in our system, that this is method statement. Many of these sketches which I showed to you, I drawn based on my experience, and also I did not exactly do what we provided there because that's against ethics. So I drew my own. So that there I was confined to something, I limited on my own. I'm not limited. I'm just trying to tell you what can be done. These are only few documents, few sketches. I did with thousands. Just for information to those lazy people who do not want to act, to those lazy professionals who don't want to act, who just want to, oh, do it like this, I'll see later, I'll come, call, you call me, I'll call you. No, not at all. Language of engineering is drawing. It's not tongue. It's not mobile. Drawing tells everyone what you have to do. That is management. We are missing management everywhere. Manage properly, you will get quality. You don't manage properly, you shall not get quality. You will just spend money with no quality. This is what I want to communicate. It is difficult, I know. It's difficult. You may say there is no such release. We can do without that. No, you cannot do without that. Even if you know, you write document. Somebody else must know. Your team must know. Your foreman must know what is going to do. Your supervisor must know, so that they can also explain, they can instruct to their crew what they have to do. That is what's required. Every mason knows job, every carpenter knows job, every plumber knows job, they know their job, but they don't know quality. You understand? I have seen welders, they are doing welding, they are doing grinding, they are doing that, but they don't understand reaming. Have you seen someone who welded and leave that tags there and go away? Tags, small material lying there, it should be reamed properly. It should be brought to level of surface level. But nobody leave it, and later on it pinches on your hand. Probably. It touches your hand, you cut your finger. Because reaming, they don't want to do. They don't know, I have to do some of the job. I'm just giving an example where it lies. We should be clear what has to be done. I'll start methods later on. I'll tell you about facilities also. These are just introduction of sketches because the sketch speaks. There are other sketches also. I'll show you later on. I have put specific things of safety on my text, and I'll try to put as much information possible, but I cannot show you everything here. It's not something you can disclose everything, because people must be interested first. Moreover, no one has that much information. We can give you everything. I try to explain. That's more important. If you listen, because you have to create your own. No need. You don't know. You don't see what I do. You create your own, being professionals. Maybe first time you find a problem. Second time you have some ease. And third time you may stand yourself. I can do it. I want that quality of a professional. Initiative, start, plan, do, check and act. That capacity you should have. Otherwise, you don't call yourself professional if you have to follow someone. If you exclusively follow someone like a fool, follow. Don't call yourself professional. If you cannot think and do. Why we say
think tank. What is think tank? You think tank is only a title? It's a verb or a noun or what it is? You have to think and store. You have to think and store. If you think 50 times, 100 times for something, it remains in your mind. That is called tank. If you think right, you will have got right tank. If you think wrong, you shall wrong tank. So you are a tank. Make yourself a tank, then you make yourself a reservoir, then you make yourself a river, and then see. That is intellectualism. It's not simple definition. It is definition based on expectations. Your mind is not limited. Quality is not limited. And if you start like this on your own, you start quality action. Quality exposure and quality disposal. That quality is required. As I said, we check at every item. We ensure the item is okay, and I'll go to talk to you about that sooner as much as possible, because everything cannot be disclosed in one day. As I said that day, I told you about these columns, foundations, we check. What actually I try to tell you. Though it's very simple, it is done or not done, I cannot say. I can only say something very significant here. Let us say example here. You might have seen this sketch before, as I said. There's a sketch here. Again, sketch. This is a small handwritten document. This is a sketch here. This sketch shows that it is shuttering or formwork of a column. You can see this hatching line, this inside dot 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 is all concrete. This is a column. You have to do concrete on this, you have to do formwork. You see this for ply you can see, and then on ply there are timber patterns. You have to check this column. Carpenters doing shutters on that. How to check that? Simply fixing, you think is an answer? Simply fixing is not an answer. Answer is rightly fixing. It's a vertical member, column. Pillars you call it, I'm calling column. It's completely vertical, having square shape or rectangular shape or any other shape. It doesn't make a difference. It can be circular also. This column I have to put in shutters because I'm going to pour this column. How to do that? We have site layout is here. This is your location of column that we checked. That is say ready. I'm not saying that we are going to set now. It's ready. We started formwork. Our carpenter starts a formwork. He just do roughly now. I just done it. It doesn't know it's right or not, but he on that line he has erected it. Question is how to ensure that this is right. This is in that line and is at top also in line where there is no line. Line you put on floor. This is a floor. This is a floor here. You put a column here and it's going up. But there is no line. But it should be on same line. It should be same line. All these four sides should be same line. This should be straight vertical, not linked this down like this. That is what we have to check. That is part of quality. We have to do it on site in that position. Shape should not change. Vertical standard should not change. And it should be completely vertical and dimensioned. That is where I want to say that we are doing that. If we are doing that, let's say a reverse side, I show you like this. It's easy for me. Now this is formwork here. This is formwork and we have to make sure that's right. Now, the line at bottom are here. You have to start that and fix all. You see there are four sides of this and I have put some A here, example, you see this A which is about what we have to measure and I have written here, you see 1000. This is here from center of this column
to a line that is saying 1000 millimeter or 1 meter, and we put a thread at this point at certain height from where column starts, say 30-40 centimeter above, a line at 1 meter from center we put, and this is all columns whatever in this line are coming in. You can say, for example, there it is. And say here there may be 4 or 5 columns in one row, and we have to put this string at 1 meter from that. If you see here, I have written something. You can see that. It's written something here. This is A equal to 1000. This is reference one. I am taking 1000. It's not necessary to take 1000. It can be 1200 or whatever it suits you practically. Then I have taken minus 200. Then I have taken minus 18. And then I have taken minus 75. And it's coming 703 millimeter. What is that? It is, what is that is, let us say it is 1000 millimeter or 1 meter. I put my thread, my string or line dory from center or axis of column. At this end, at another end, there may be any number of columns in between. I put 1 meter from center of column, that is also from reference line, center of column to you can say columns or bed, whatever it is. That distance is 1 meter to center of column, and where we start is complete. That center of other column or whatever, you have this dimension. Then this A 200 mm I am taking out. I am taking out 200 mm because I am considering size of this column is 400 mm. It can be anything. Means wherever you are start, that should be out of this. 200 I am taking. If size of column is 400, and axis of column is usually axis of that line. So I deduct 200 from that. Then I am saying I deduct another 18 mm from that. For what it is? 18 mm is ply size, ply thickness. Whatever ply we are using for that, that is thickness. So I use, to measure it, is I reduce half of string and ply we take out. Then I say it is 75 mm, and what is that? That is size of timber. 7 is 703. Now let us see what is this 703. I am just trying to explain to you something very practical, detailed. What we will look at. Now, this is that one. I am saying this A is there from center of column, but A is there, A is there. You see, A is there from where? It is up to that timber or wood, batten, batta जिसको बोलते हैं. It is up to there. Now this A, if I check on site on one column, it should be same as I calculated. This is 703 mm. If I don't get up to this thread, this dimension, this means there is something wrong. Same should be at other end, so that I can check all whatever columns are coming in that row. This point should be this much according to my preference. 703 must be 0.5 millimeter, that's tolerable. But this is prime measurement for thread, for string. So that from there I'll check all. If these two columns, the one column is here, another one is at end, I put a thread C, and then I'll check all column in between. Should be same. So it's simple tape you measure. If this 703 doesn't come in this case, there is something wrong in your layout. Then we will say it's okay, it's fine. At this is fine, and we take a top is also we have checked. The one is checked. This is, you say, location of this column. Try to understand what I am saying. It's very important step I am telling you. We have set dimensions of this column. This ply and these battens in that one.
Then I say this horizontally it is now in control. Means we have said this side and this side, all four sides are actually on design line. At bottom and on top, this I assume. When I fix on top also, I can take out that same way on two ends and see. Now we say that square or rectangle, what is this? It's right. But let us say height of column is 4 meters or 12 feet or 13 feet to be cast. 4 meters or more. On four sides you have to see whether this height is also vertical. So if bottom is there, I take vertical measurement. Vertical is by using plumb bob or Sahul Sutra. If you check in those 3 meters height or 4 meters height, every 1 meter will find some dimension to certain reference. Certain references, it will be sugar, it will be whatever item, means which does not go away but taken. So now what we have to do, we are sure that column is set right at ground level or at slab level. You see this, there are some circle I have drawn here. You can see that, this one. This is not actually circle. This is a stone or some heavy piece. Heavy piece actually this is plumb bob. Plumb bob, Sahal we call in your name, Sahal. We have to ensure from height at top, location at top to bottom, it is maybe 4 meters or 3 meters. At 2 or 3 locations, every 1 meter down, you have to see whatever comes at bottom should be everywhere. Whatever reading comes at bottom, and that reading is this one. Now we fix this, just free fixing, no nothing else, and we may measure this string held by you can say by another string, line dory. This is weight. I hang it. I put there on top and check at 3 or 4 points what this gives at same time, equal length. All these 3 readings in vertical must be equal. If I take string here down, plumb bob, and check here, and 1 meter down, 1 meter down, all should be equal. If these are not, this means surface is not vertical. It's not. It is not this. It is either this or this or this. That point we have to check, because that is control point. So how many controls we have here? Horizontal control. Dimensions this way and this way must be according to drawing. No choice in that. Bottom lines and top lines must be same in same level and line. And I'm saying hold this plumb bob, and I have held it on one side at 2 locations. Once again you can see that. You see that it is on 2 locations, and you take on both walls. It means I have shown on one only because of clarifications here, but you put on at least 2 sides and 2 more if you can, and you can check. If you see this I have shown here, hangover of this equipment. When we say this way lines are over, dimensions are right. When say dimensions are right, and we can check diagonal as well if you want, so this should be equal. If diagonals are equal, lines are equal, so it is 90 degrees certainly. Otherwise it's not 90 degree. That's a big problem. It's not 90 degree. We have to stick to that geometry of your column. Otherwise it will cause a problem. You cannot change geometry of any structure. It's not possible, not permissible. So we check 2 control points: dimension, angle or diagonal, and then say distance of that A as I showed from line dory or from that string to that one. That we check. We checked vertical plumb.
If there is some, we have to adjust that. What to do? How you see this sketch here? It's elevation. It's elevation. Yeah, see. Sorry. Yeah, this is here. I have seen supports to that. I have put supports on that. Oh, let me see. Some light is lying on there. I'm not able to see thoroughly from here. You see, there are lines. It may be not clear to you. I'll show you in some other sketch as well. Just trying to show you here. There are supports. I written. These are supports here. You see, these supports are shown. And these supports, one support at bottom, then an inclined support, and there's another support, inclined one. Top I have written there, and I have written this, another one here, and then down. It first support bottom, from bottom you see, this is very important support, and I have written there resultant. Means force is coming at a point, final force. So this support at bottom, middle one is very important. It takes total horizontal force of this concrete and members, and other one is just to hold them in position. These two important points are here. If these are all okay, your vertical measurement is okay, your horizontal control is okay. So how many controls are there? You can say line or rectangle or square control, right? It is in right, diagonals are equal, shapes or sizes are equal, and then you say from that column, from that line of grid to this is okay, it's fine at top and bottom. Then you can say vertical surfaces are correctly in slump. You may go to your electric use, you take your items, leave them there, go and take facilities, keep this equipment in secrecy. It's up to you. I'm not buying that. But once you have this clear, you cannot say, you can say that you are in control of that. And if you are in control of supporting system, as I said, 3 supports on one side, but at bottom to keep it held, one at top to keep dimensions held, and one in bottom to control forces. Control forces. And that is where we have 3 controls here, and these 3 controls are very important. If you can control this, you ensure this formwork shall not move, and you ensure these steel bars you have fixed are well fixed cover. They are well fixed with cover up to shuttering of that. This cover is between steel and shutter, and you can see the covers are there in place, and these are, you can start pouring after approval, pouring of concrete. So this is very strong, ensured, should not open if supports are okay, if there are bolts in that. That's what is physical check of some work. These are only prime points I have given you. Then every support has to be checked, every tightness has to be seen. Those are means of secondary nature, but prime fundamental is that you have ensured sides are dimensioned, diagonals are equal, and that its functioning may be right, provided it is well placed in sides, is well placed in every minds. If that happens, you shall not earn any bad name. These checks if you can do on walls similarly, on rectangular column similarly, square column, rectangular column, or whatever shape it is. I'll show you the sketch in a clear way if I just take a minute. In this book, as I shown you before, it's not for promotion but for reference only I'm showing you. Don't think I'm promoting it, not in a particular way. Just trying to show you what it was. In this, I'll show you the sketch here, and as a sketch just for more clarification, because maybe I don't find that immediately.
Let me see if I can do that. Because later on it's difficult to remember. If I remember at one time, it's okay. It will take 15 minutes. Yeah, I think I can do something from here. Let's say many sketches I'll show you. Many sketches at once. Before also I show you, but you may not find that here in video is. I'll do a few sketches here. For example, there's one sketch here. I think some shade is coming in. No problem. This is some line work, form work shown for your reference it is. And I'll go to next page. So you see some shutters, some columns are shown. A shot there. And I'll try to find that I was explaining to you. Another one, this is for your information, different shapes of these this is a different shape of building here. You see columns are here, everything is here. This different shape of building is here. Shutters, this roof shutters or slab shutters. I've shown written by pencils anyway. It's not clear to here, but just see shapes only. It would make you understanding. If you understand here, a different shape here is also different types of building. As many as I can show you now. It's difficult to show everything. It's very complicated shape here, but the building is like that. This is the shape of building. Or it's very zigzag type. Let me take that give it that one. It's another type of building here. That's this type of building as you see. Yeah, it's here I got it. For example, this is you can see this. What I wanted to show you is this. There is a lift, but the principle is same. There's a column here, say, this is that I tried to show you. These are all plums, not ordinary plums, heavy plums. You can use block, you can use concrete piece, heavy piece, and these are hung from top to ensure. You see, they have in this case 3 I have put here in this column because this wider column. When you put these circles or circles, these are all heavyweight stones or blocks or whatever, so that in fast wind these do not run away, these do not, you can say, tilt, or these do not dance, they stay. And we can measure at top, at middle, everywhere, and you can see sail. And I put another dimension here as well, which can be measured. You see this line here? References are given there for that purpose. This is what is important, This column is like that. See how I shown ply, then timber, and then corners, and many more details here. These details actually we do not understand and feel, but it's a must. And that person is called experienced one. And all these sketches are shown completely. It is done in field, and that's why I'm showing you before. It's all part of checking, all parts of checking, but I'm going to explain to you later on. It's all that part. Hopefully don't disturb me, my dear hostess. This is a problem here. It disturbs a lot for me. As if he is having any emergency, he wants to talk to me for what I don't know. Just remove it. Get lost. Yeah. This is it. Detailed one. If you refer to this, you can understand. Otherwise, I'm just showing you at corners. You see corner controls, dimension controls, and all controls are there. Supporting controls. I have shown supports again. Where supports, how it should be,
This is all, I didn't learn from a book, I learned from an experience and produce in that. So you won't find that type of indications in some books. And that's the beauty of it. I'll show you some more also here. You see, in vertical direction I'll show how we do it on the side. This is vertical elevation of a column shutters. You see these numbers, shaded one, vertical, horizontal, and clamps, these small thin lines, black. All shikanjas we call it, clamps we call it. It's a RCC floor below, RCC, and on which column is resting. It supports complete. This is, and you can say, the lines are showing that we have to put support, setting line supports. That is shown you. This is what is detailing. And you see I have taken a piece here at corner. This is extending piece from this shutter. This is the small thin line here, and this down. You are finding a hung stone. You see this circle? This is hung. This is plumb actually, plumb bar, or side plumb bar, high plumb bar. And then you have to check at various levels. You can see at this level, that level, you check equality or not equality. If there's a difference, you have to correct that one before concrete is done. And this is called vertical controls. So there are vertical controls, horizontal controls, supporting controls, and very more controls. I don't think it's very much technical, but it's just indicated this is a column, say column shutter, and then just dimension that one. How we fix these sides. I'll work on that. So these are all points that must be understood by those who work in field, particularly those who are tradespeople. So you can see another retailer of that before I close it. You can see that. You see this detailing of column. Jacks or supports are shown. You can see that also if you want to see. See, you will find one support at bottom, one support at middle, and one support at top. Middle support is we have maximum force comes. That's height over third. And bottom support is meant to keep that position of column intact, and top support is also for that to keep position of this column intact. This is sole purpose, and this is technical issue where we measure that it's coming. Another elevation you can see by chance. I'll try to show it now. Then we are opening. This is elevation of that. How it looks in elevation. It's all complicated looking, but it's not actually complicated when you do on site. It's complicated in the sketch only, and it's all drawn manually. It's not drawn. It isn't drawn by computer or something. So I keep it now. I'll explain to you later on the remaining one, because you cannot digest everything in one go. So that's what I say. How to control this check? That is what we have to control. So when we talk of this in our statements, quality statements, we'll take up this issue so that you can understand. It's not simply I speak and say this you have to do, and you don't understand what to do. That is reason I am trying to pose you what is done, how it's done. I'll continue later on also on this, but I'm just trying to see what is quality check, what is quality control, what is test. This is also a kind of test. You cannot say test it done in laboratory only. No. To ensure that your verticality is vertical, it is also a test. You test at this point, test at this point, test at this point. You test that at 2 locations or 3 locations so that all surface is covered. You are testing horizontal lines in same line or not, or it's moved. You are taking one
at this another column at this, and you put a string. There are 4-5 columns in between. You are checking every column is equidistant from this string or not. And you are checking plumb with verticality, 3 points here, 3 points here, 3 points. So surface is truly vertical. This side is vertical, this side, though 2 sides you are taking, so automatically 4 sides will be vertical because your tied clamps are there, it would not move, and your top position is fixed on same location as bottom location. So dimensions you have checked, diagonals you have checked, plumb you have checked, size of your column you have checked, and horizontal and vertical controls you have checked, covers you have checked. You have done all these tests. This is part of quality control. Means you have tightened them in position. Even if you concrete them, there are remote chances that this setting may fail. If there is some problem, they can fail. Because you are supported, you are clamped in, you are vertically fixed and internally fixed covers. This is, you can say, a professional work by a traditional tradesman or a professional carpenter. If you limit that yourself, then there is a pouring control which is different. This is forward control, there is a still fixing control, the pouring control, and then removing shuttering, that's also a control. And before that, survey or layout control. So control after control, after control, after control, after control. You think it's easy? It's not easy, but it is very easy also. If your people know job, if you know job, do not just run in panic. No panic. Think, plan, do, ensure it's fine or not fine, remedy. In first go, it looks very difficult, but once you repeat that, you get some information, you get happiness that I am moving successfully. And once you start moving successfully, your people are accustomed to that. I don't think you shall find some problem later on. By error it may be, by ignorance it may be, but not by technique. Because what happens once you think you are doing so much good, you are expert, certainly you will make mistake, overconfidence. And once I have done so much, you want to review that. Review is also important. It's very important. And sometimes not only review, ensure material you are using is good. For example, you are using jacks, steel jacks. Maybe there's some hole in some jack, it's weak. Or maybe some problem in steel connections somewhere. So those also we have to ensure. So this is quality system control. So in this column we are saying we have layout controls, we have shuttering making controls, first shuttering making, steel making controls or cutting and binding controls, shutting erection control, then dimension control, then you can say measurement from some string control and plumb bob controls, vertical controls, then internal cover controls, and then controls of steel and concrete. Steel and concrete. And if you can do this hard work, it's not so simple also. Because if you are doing this, you have to be on your side for a couple of hours that time. That's what I want to try to tell you from these documents. So I have told you how many documents, just for your refreshing. So far these layman documents I have showed to you, which are few and which are here. I just for reminding you, it's just a question of half a minute it will take before I close this. That documents here are, goodness, these are all text up. Oh, come on, don't waste time. The problem is, no problem, I put it here. Okay. I have showed you certain documents. First I showed to you what we are doing. We are doing reliability. We are doing reliability work
which means safety, service and durability. This means total quality we are giving to you. And these are many sketches, rough sketches you can say. These are all rough sketches for information, only hand drawn, published sketches. Immediately in 1 minute I will review this. Then you can say here is, this is another kind of information I gave to you in terms of layout, how layouts are done, all that. This is that one. So this is just for reference. We have talked on this. Yes, we have gone through this and we'll go through them again if right time required. And I explained to you what is foundation. That's what I explained what is, and this foundation was here. As I showed you before. This is that foundation. This is that foundation in concrete. Ordinary foundation. Isolated footing or independent footing you can see. And this was your different type of footing, which I don't prefer, but people do it also, which requires a complicated shuttering, but people still do without shuttering. That's not correct. And then I showed to you this footing, which is combined footing. Combined footing here, this section of that footing, and this is plan of that footing, rectangular footing. When there's a border restriction on your plot, there's some other building existing there, there's a squeeze, you can't cross that. So you have to change your design to combined footing. Two types of combined footing I showed to you before, still two, and then reserve the section of this one, how to fix it, that the section of this is footing, combined footing with columns, and what sort of section is shown. 8-legged, 5-legged and 8-legged. So this is 5-legged one, there can be 8 legs, 5 legs here is, 5 bars, 5 bars means 8 legs, 5 bars and 8 legs, and there will be 12. It's different type. So this is that one, and then I explained to you about this one. I explained to you about this also. This is trapezium footing. It's a combined footing, trapezium shape, which is used where there are restrictions more than one end. There's a restriction on two sides, and this is also different section. You can see this another layout. Strip combined footing for all columns. It's combined. All columns are combined by footings. Start, you can see. They are combined. All columns are combined, and this is your section of that. Different types of sections. It's a very safe for building. And then I also explained to you about the surviving, what we explained, what we learned in that, and then I just said this is your kind of structure which you're talking of. Structural framing, 3-dimensional slabs, columns, beams, foundations. Just for information we did. So this is what was important to discuss with. This is framing, and that's very important one. So we have discussed all this. I think maybe you got something out of that, otherwise no problem. And this is another one that I showed to you, that grids are shown here, various grids. I showed you this was we dimension on grid dimensions are A, B, C like that, and 1, 2, 3, and we control layout like this. Without this you cannot control, and we consider one axis, one center point, and measure from there for good controls. We cannot say we measure up to that point. No, we have to fix one point in that building on both directions to keep controls intact. That's the purpose of that. You can see that here. This is that. Controls must be there. So we actually try to make out certain normal controls on layout, on individual columns, on group of columns, on shutters, and still I don't tell so far, for pouring I don't tell so far. These are normal points, and now I will take leave because it's already much time, and the sun is on my face, I can't do that. So I'll close it with you with hope that you may understand something. Will continue tomorrow and take care of your protection from problems. I hope you are fine. Thank you very much, everybody.